I've been running for so long but got nowhere. I've been trying love again but I guess I'm scared. You got danger in your eyes but I don't care. If you wanna take a chance, just beware. I keep chasing you but I know that you just gon' run away. You don't know what love is but I just can't let this feeling fade. Even after all this time I still can't get you out my brain. But I'll try tonight, but I'll try tonight. Baby, let me show ya. I just wanna adore ya, adore you. If this thing has to end, would you do it again? Would you do it again? You've been taking some time alone, you know I'm waiting. You don't need to know I'm here, you know I'll be there. Even after all this time, you still can't see it. No, no, no. I keep chasing you, but I know that you just gon' run away. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। तो आज हम खेलने जा रहे हैं जेनशिन इम्पैक्ट और अपनी जर्नी कंटिन्यू करने जा रहे हैं इनाजुमा के लिए। तो थैंक यू गाइस स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर डेली लाइव स्ट्रीम। और बिना किसी देरी किए चलते हैं सीधा गेम में। और रुद्र कैसा है? वेलकम टू द स्ट्रीम। आई एम एमसीपी। ओह ओके, वेलकम टू द स्ट्रीम, बाय एंड थैंक यू स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। गेम छो, अरे मजा, वाह, सही है सब। और अर्शी कैसी है? वेलकम टू द स्ट्रीम। आई चेंज माई फोन, सो अच्छा आईडी चेंज करिए क्या? और हैरी कैसा है? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। नया गेम खेलो, कौन सा खेलूं रे? या मेरे पे नया गेम है बट मैं वही कह रहा था तो सब कह रहे हैं कौन सा था वो, वॉकिंग डेड। तो मेरे पे सीजन 3 पड़ा है वो, तो मैं अब सोच रहा हूँ उसको सीजन 1 से ही खेलूँ। अब उसका जुगाड़ लगा रहा हूँ मैं, कहीं से देखते हैं मिलेगी तो। Where did that come from? अच्छी हो और आप? अरे मैं भी एकदम सही है। और क्या चल रहा है? सब सही घर में? सिल गाटा, ये क्या है? स्लिट गाटा, ये कौन सा है? नया है, फ्री है। स्लिट Benny's गाटा। adventure team, assemble! और हैरी कैसा है? स्लिट गाटा, Or not. that's a split gate। माइक्रोसॉफ्ट का 7.1 रेटिंग है। अबे स्प्लिट गेट है वो। ओ स्टीम पे है, इवन रुको। एक्सबॉक्स पे भी है क्या? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. स्प्लिट गेट बेटा में है, हाँ, फ्री टू प्ले। Benny's adventure team, assemble! ये है, देखता हूँ गाइस। हेलो का है, हेलो का पार्ट है ये। हेलो मीट स्पॉट है, लोग है। Or not. देखते हैं इसके रिव्यूज, अगर अच्छे आएंगे और इसका चलेगा इंडिया में तो ये खेलेंगे फिर। बाकी अभी तो यही जेनशिन ही खेलते हैं। डाल लूंगा इसे भी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअली ना इनाजुमा खोलना है इसमें, जेनशिन में। यू टेलीपोर्ट इन दिस गेम, क्या बात कर रहा है? सही है। Knowing my luck, मजा the आएगा opposite is probably true for me. मुझे इस गेम में तो मैं अगर पता हो तो नया अपडेट आया था इनाजुमा के लिए, मुझे बस वो खोलना है मैप। वो नया मैप एक्सप्लोर करेंगे और फिर चलेंगे। Benny's adventure team, assemble! Or not. चलो गाइस। Oh, ow! Where did that come from?
हम यहाँ पे थे, एंटर द रूइंस। यप, और हमें 46 लेवल चाहिए था। चलते अभी इनाजुमा की जर्नी के लिए। आर्या इज योर फ्रेंड? नहीं रे, आर्या मुझे ऑनलाइन ही मिली थी, मतलब स्ट्रीम पे ही आती है वो। ये फ्रेंड तो नहीं है। अरे डोमेन में आ गए हम। नाइस, मजा आएगा। चलो। So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That are the stupidest. To get to that creepy statue, we ये just क्या need बकवास to है? follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, हम that'll वापस work. सेम पोर्टल में आ Let's गए। go. And remember to be on your guard. अबे अब यहाँ कैसे जाऊँ? वाह वाह, मतलब बबल में फंसा तो मैं मर गया। हद हो गई, इतने सारे बबल हैं इसमें, तो कैसे करना है ये? टाइमिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अरे भाई साहब, फंस गया। नहीं, बच गया। हो गया। यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, इजी पीजी। यू प्ले आई और पीसी एंड आई प्ले इन माय एक्सबॉक्स सून। अरे ठीक है, साथ खेल लियो। ये स्टैचू उल्टा था ना यहाँ पे, स्टैचू ऑफ 7। Eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. सही बात है। Be careful to बेचारी not be पाइवन। overwhelmed by the power of the defiled तो ऐसे statue. क्रॉस प्ले भी है, तू एक्सबॉक्स पे आ सकता है, मैं The पीसी पे आ Abyss सकता हूँ। सही है, It's तो here. मजा आएगा अगर ऐसा कर सकते हैं तो। You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff. अब भाई से मैं 3 बार मार दूंगा, लिटरली 3 बार। ये अभी भी नहीं मर I के दे रहा। sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more than we are the same. We're both लाइट बॉट गलत लिंक dangerous, डाल रहा है, किस चीज का? but dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. किस चीज का गलत लिंक डाला रे? लिंक तो डाला ही नहीं, आई गेस। It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! यूपीआई का? नहीं, यूपीआई सही है रे, आई गेस यही है। इसी पे ही सबने डोनेट करा है मुझे, जितना अभी तक करा है यूपीआई पे। What's the hurry? Give up. इजी ऐसे तो मारना। अरे पानी Cool it! Don't waste my time. Submit. Freeze! Give up. Let's light it up. नहीं, मर गया। बच गया, टाइम तो स्विच कर लिया मैंने। It's nothing.
अरे यार हेल्थ कल चली गई। प्ले स्नेक गेम वो ब्लू नहीं है सो आई थिंक नहीं यही है। नहीं वो लिंक नहीं है एक्चुअली, वो यूपीआई आईडी है इसलिए वो ब्लू नहीं आ रहा। जो लिंक होता है ना वो ब्लू में आता है, बट आईडीज वाईडीज ब्लू में नहीं आती इसलिए। Decrease all party members sprinting stamina. Members 27 consumption by 15 go over this alert. Okay. Your favorite roaster. Roaster मतलब जो रोस्ट करते हैं। यार मेरे पे कुछ खाने का नहीं है बढ़िया सा। I'm getting tired of this game. Teamwork is dreamwork! Dodge this! Oh, so. Off we go! Give up! I taste blood. अरे यार इसकी हेल्थ का क्या करूँगा? यू नो जोगिंदर, यस मतलब रोस्टिंग में तो मेरा वो डैंक रिशु, अगर तू जानता है तो। अबे हो गया फाइनली। प्लीज प्ले सीएडी टीचर 3D। क्या बात कर रहे हो? वो भी अच्छा क्या? क्या सही लड़ाई है इसके? अरे पकड़ लिया। ओ भाई साहब बैडएस। प्रिंस, ये तो उसका भाई है। Hey! Could that be? Lumine. I have finally get out of this. Too dangerous. Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. Your brother and the Abyss? Lumine, why are you with Dane? Uh-huh. Your brother knows Dane? Oh, okay. Ether, we meet again. ये तो इसका भाई था Ether. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't team up with this It's man. Ether. He is my enemy. Okay. Ether, Hold on a second. Stop saying things that don't make sense, Ether. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Okay. Dainsliff was the Twilight Sword.
one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? 500 years And ago. you said the Lapis people Diamond, turned give me into monsters? Primogems. Arey. You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? Oh. And the whole thing about Dane being your enemy... Oh... Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. सही But बात I है. cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Destiny? Listen to me, Lumine. I क्या have बोल रहा है already ये? traveled through this world once. तुम्हारे पीछे में नहीं चलेगा. Once you क्यों? reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Okay. ये तो कुछ नया ट्विस्ट आया बढ़िया. So we'll meet again. Though we need not rush, sister. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. अभी ये क्या हुआ? Scary Teacher 3D game. Pisu? They left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Oh, well then... Okay, the Travel and Paimon try to recall as many details as they can. नहीं चलेगा First क्यों? off, that Abyss Herald called उसके लिए your brother 30-90 चाहिए. Prince. It seems like your brother is leading the Abyss Order. Yup. Even the Abyss Herald answers to him. और आयुष कैसा है? Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the organization. Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? अरे यही कह रहा है कि Could it चलेगा be नहीं he तो wants मैं to वही पूछ रहा destroy हूँ. the Seven चलेगा क्यों and नहीं? the Seven क्या रीजन है? Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was तो जिनसे मैं तब से destroyed. लड़ रहा हूँ ये खाने के Story ही is just बंदे हैं. मतलब लोग हैं जो मर गए. And मतलब Dane मर is नहीं गए, from मतलब जो चेंज हो Conria गए. too. He witnessed its destruction 500 years ago. But पीछे पे नहीं चलेगा he Scary Teacher turned 3D. into a ओके. monster. किसी And पे now he's ही चल fighting the जाएगा भाई. Abyss Order. मुझे पता नहीं. So शायद तो चल that's जाना why your चाहिए. brother said that Dane is his enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's up with that? Thinking about it over and over will solve nothing. We have many new questions but few answers. Yeah, then we We can't can let ourselves get down. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to this. If your brother wants you to reach the end of तो your अब हम journey, इनाजुमा की जर्नी show कंटिन्यू him what करेंगे you're made जहाँ तक of. मेरा वो है. Come on, traveler. Let's go. Let's go. अब इनाजुमा चलते हैं गाइस. ये वाला हो जाएगा guys. We will be completed. या फाइनली कंप्लीट हो गया पूरा. Leave the domain. Let's go. मतलब पीसी पे क्यों नहीं चलेगा मुझे समझ नहीं आया. उस पे ब्लू स्टैक पे तो आगे सारे गेम ही चल जाते हैं जितना मुझे याद है. मतलब पता है. ओ स्टैच्यू ऑफ 7 पे चलते हैं. हेल्थ बढ़ाते हैं थोड़ा भाई जोगिंदर. चलो हेल्थ बढ़ा ले पहले जाके.
हेल्थ कम पड़ी है भाई। अरे चल जाएगा ब्लू शैक पे, हाँ मेरे हिसाब से चल जाएगा। तो देखो गाइस ये तो हो गया अपना, अब हमें करने डेली का मिशन, तो जाके करते हैं, सेकंड्स में करके आते चलो। तुरंत तुरंत करके आएंगे। आई एम जोकिंग। अच्छा मेरे नहीं, Nothing more than regular वैसे भी वो चली snowfall. जाएगा मेरे साथ, ऐसा कोई दिक्कत One नहीं day है। अरे I'll इसे take फेल you ला to यार। see the snow that falls over Liyue. हेलो भैया जी, स्माइल। अबे 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 ये चाहिए तो वो छोड़ के जाता है ना। हो गया, बस कर जा। Freeze! ये सबसे सही लगता है यार मुझे इसका ना, अल्ट बहुत सही है रेजर का। तुम्हारी मर गया ये तो। मिशन कंप्लीटेड गाइस, इजी पीजी। मेरे पे 8 है, ये 10 देने होते हैं। ओके मैंने ये वाला एरिया ज्यादा ना मतलब डिस्कवर नहीं करा, सोच रहा हूँ मैं एक दिन बैठ के यही करूँ। ये वाले एरिया में बहुत सारे वो रेड वाले स्टोन्स नहीं होते, वो है तो वो डिस्कवर करूंगा ना, तो ये इसका लेवल बढ़ जाएगा मेरा एक और। यही पे दिखा रहा है। इसकी शील्ड तोड़नी पड़ेगी यार, मरता नहीं है बिना शील्ड तोड़े यार। Let's light it up. बस अब गया ये। Get out of here. Take cover. Don't waste my time. चल कर गया। स्टेन मास्क, ये तो और आ गए। You wait. हो गया बाबू आत्मनिर्भर सही है। अरे इधर आ इधर आग निकाले। Freeze! It's nothing. एक बचा है ना, इधर आइए। इधर बस के कुछ है नहीं, पैदा होते रहेंगे। ये भी हो गया गाइस। पता है काफी लंबी गेम है ये, अभी आने वाले 10 साल आने वाली है ये, पता है गेम आगे। सोचो 10 साल तक ये गेम चलेगी। इनका प्लान है 6-7 साल तक अपडेट निकालेंगे, इसके नए नए मैप्स आते रहेंगे। जैसा भी अब वो आया है। बाय बाय अर्शी, थैंक यू स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। कहाँ जाना था मैं? अभी जैसे इनाजुमा नया अपडेट है, देखो ये वाला, ये है अपना मॉन्स्टैट, ठीक है, और ये है अपना लीवे, ठीक है, ये है अपना ड्रैगन स्पाइन। ये 3 मैप आ चुके हैं। अब चौथा मैप देखो तो दिखाता हूँ, ये आया नया चौथा मैप इनाजुमा। ये पूरा सेट मतलब इलेक्ट्रिक उस पे है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो उस पे है, एडाप्टाई पे, राइड एंड शोगन और ये सब है इसमें। यहाँ पे जाएंगे, मजा आएगा। नए बॉसेस आएंगे, नए तरीके के वो आएंगे, हर चीज नई होगी। तो बस यही है, तो वही अपनी कंटिन्यू करनी है जर्नी वहाँ तक की। नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। अभी
अगले अपडेट में शायद योई मिया आने वाली है, योई मिया को भी खोलेंगे। या बेस्ट फ्रेंड मतलब कौन गेम में? Sweep up the piles of leaves. Okay. Sweep up the piles of leaves. कहाँ पे है ये? इससे तो कुछ ही नहीं हुआ, यही है क्या? रुको तक करके देखते हैं। नहीं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। रियल लाइफ में तो यार एस सच में किसी को नहीं बोलता बेस्ट फ्रेंड। सब फ्रेंड ही है, बेस्ट फ्रेंड यार ऐसा कोई एस सच कोई नहीं होता। देखो सब कहने वाली बात है, काम के टाइम पे जो काम आ जाए वही बेस्ट फ्रेंड है, जो नहीं आ रहा तो नहीं है। तो जब तुम्हें आ जाए कि हाँ भाई पाइल ऑफ द लीव्स, क्या करना है इसमें? पाइल ऑफ द लीव्स तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अबे एक भी नहीं हुआ, क्या बकवास है ये? पांच दिखा रहा है, हुआ एक भी नहीं। स्वीप अप द पाइल, पाइल तो वो हो गया ना, मतलब ढेर। स्वीप कैसे करना है, मतलब समझ नहीं आया। ये है क्या? पूरे में घुमा दूंगा। हाउ मेनी मार्क्स यू हैव इन योर 10th में मेरे 10th में मेरी आई गेस 9.2 थी। मार्क्स नहीं पूछते स्टूडेंट से। अरे 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 सही बात है, वैसे मार्क्स पूछते नहीं है, बट ठीक है। और नमन कैसा है? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। अभी क्या करना है इसमें, कोई बताएगा? कौन सी झाड़ हटानी है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। स्वीप द क्या मिशन का नाम? स्वीप द नहीं, स्वीप अप द पाइल्स ऑफ लीव। आ गया, हाँ पाइल्स ऑफ लीव जेंशिन इम्पैक्ट। हरी हरी गांजे की होंगी देखना। अरे वही सारी हटा दी मैंने, दिखी नहीं रही। यहाँ दिखा रहा है। मतलब हद हो गई। हाउ टू स्वीप अप द पाइल्स ऑफ लीव, मतलब थोड़ा इजी बना लेते इसे। I smell rabbit. अबे क्या मजाक है, समझ गया। इनसाइड द डॉन वाइनरी में भी नहीं यार, वो नहीं करना। बहुत ज्यादा यू नो बेसिक था, बट दिमाग लगाने वाली बात है। देखो अब मुझे बस एनिमो हो मेरी वो। अरे यार जियो पे कर रखी है मैंने, शिट।
मुझे गाइस स्टैचू ऑफ 7 जाना पड़ेगा, इसे वो एनिमो में रेजोनेट कराना पड़ेगा जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसके बाद वो मुझे उसे विंड से ब्लास्ट मारना है वो साफ करने के लिए, तो साफ होगी वो। सेटअप This world is full of ये रेजोनेट विद एनिमो। अब मैं एनिमो कैरेक्टर बन गया, अब मुझे वहां जाना है वापस से। अबे इतने सारे मैसेज आए हुए हैं, क्या बकवास है। अब ये एनिमो हो गई ना, अब इससे जाके मुझे बस जो जितने भी घास है ना उसको मारना था, और पता नहीं क्या कर रहा था, बट हो जाना चाहिए वैसे भी। मेरे पे एक तो बस यही एक एनिमो कैरेक्टर है मेरे पे, एक मुझे एक और चाहिए कोई सा। वेंटी मिल जाए तो मजा आ जाए, बट मिलेगा नहीं। इवन काजुआ भाई इतना मस्त था। ये करना था देखो, किसी को काजुआ मिला था क्या? 5 स्टार जो एनिमो कैरेक्टर था। तीन हो गए, 2 बचे हैं। और तो क्या दिख नहीं रहा यार। या तो मैं दो या मुझे दिख नहीं रहे, क्या बकवास है। नहीं यही दिख रहेगा तुम्हें, स्पॉट हो रहे हो। ओ ये रे, चलो या हाउ डू यू बी लास्ट वन। ओह माय गॉड यू आर ऑसम। खुद खड़ी होकर गप्पे लड़ा रही है और हमसे काम करा रही है, भाई कैसे से लोग हैं यार। ये जमाना में शर्म है ना इसको, सही में बेशरम जमाना है। ये खुद खड़े होकर भाई गप्पे खुद ही कर लेती, हम नौकर लग रहे हैं क्या इसके, इतनी दूर से आके इसके लिए काम करें। चलो यहाँ पे है एक हीरा, यहाँ चलते हैं। हिलीचल्स को मारना है क्या? Windblade! ये नहीं टूटते ना आई गेस। Off we go. इसे कैसे गिराओ? कहीं चढ़ के जाना पड़ेगा। शैमिन आ जा बेटा। हाँ चढ़ जाऊंगा इस पे तो। Off we go. वैसे उसे मारने की जरूरत नहीं है मुझे। हेलो भैया जी आ गए हम। हाँ मार लो मार लो।
नीचे चल तू। मर लिया एक बार में। ये नहीं तोड़ना, ये तोड़ना है। I am bigger man, please shout out. अरे विपिन दुबे, welcome to the stream bro and shout out to विपिन। थैंक यू स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। तो ये भी हो ही गया, बस 2 टावर तोड़ने थे। कमीशन ही पूरा हो गया। अरे तुम्हारे बस की नहीं है। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे बस की नहीं है। डैमेज दे रहा है। चलो गाइस, ये भी हो गया। अभी शायद एक बचा होगा। नहीं नहीं, सारे हो गए, सारे हो गए। तो लेट्स टेलीपोर्ट टू एडवेंचर्स गिल्ड, अपना रिवॉर्ड लेते हैं और उसके बाद अब कंटिन्यू करेंगे इनाजुमा के लिए अपना। आगे सारे मेरे हो गए हैं जितने भी स्टोरी पार्ट थे। मुझे ये भी बनाने थे, बताए मुझे 6 चाहिए एनिमो, और जो वो है एनोमोक्यूलस, वो मिल नहीं रहा मुझे, जो एंड वाले हैं। देखता हूँ। आई गेस मुझे इसका वेपन एनहांस करना था। या ये चाहिए मुझे। डोमेन ऑफ फॉर्जरी, ट्रायल ग्राउंड ऑफ थंडर, इसमें जाके मिलेगा मुझे ये। अच्छा मैं बना नहीं सकता। नहीं मैं बना नहीं सकता। ये है पीस ऑफ एरर सोसाइटी। Ancient alchemy truly is इस वाली शॉप से तो मैंने आई गेस सारा ले लिया था जो इम्पोर्टेंट काम था। लाइक मेमोरी ऑफ रोविंग गेल सोल्ड आउट है। ये अपना मेन कैरेक्टर पे लगता है, एनिमो कैरेक्टर पे। ये सब ले लिया मैंने। Ad Astra at इससे ले लेते हैं अपना डेली कमीशन। लेट्स गो। ओह रैंक अप होने वाला है बस मेरा। Ad Astra. चलो लीसा को भेज देते हैं। बैटल पास वाला सिस्टम है हर गेम में आ गया अब मुझे इतना पसंद नहीं बैटल पास, पता नहीं क्यों किसी भी गेम में। अरे मुझे 2 चाहिए ये। लेवल 40 प्लस ट्रेजर होल्डर्स। ओके ये भी बैनेट भी अपग्रेड हो जाएगा मेरा। बैनेट को मैं अपग्रेड करूंगा, बैनेट बढ़िया है। लेवल 20 है इसकी। और 3 ये चाहिए मुझे इसके लिए। Do you have पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मर? नहीं रे, ये क्या है? पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये नहीं है मेरे पे। है क्या वैसे ये तो लियो में मिलते हैं ना लड्डू। मैंने रेपुटेशन भी नहीं बढ़ा रखी लियो में शायद अपनी, सॉरी इसमें मॉन्स्टैट में। ये भी करनी है मेरे पे। शायद सिजिल बहुत पड़े हैं, वो जियो सिजिल पड़े हैं, उनसे जगह जाके ना ले लेता हूँ थोड़ा बहुत सामान मेरे पे, क्योंकि आई गेस तलवार भी है वो जो होती है गोल्ड वाली, वो सब तो है अपने पे। Check inventory in a gadget, you can convert your useless material into something else. ओह सवाल कर रहा सही में। डीवे पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मर का दिखता कैसे है, मतलब वो ये सब पड़ा क्रिस्टलाइन ब्लूम, वो ये क्या है? मुझे यार खाना भी बनाना है, तुमने सही देख के याद आ गया। ये देखो मेरे पे बिलेट ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। मेरे पे चारों बिलेट पड़े हैं तो मुझे चाहिए नहीं अभी, तो बाकी बाद में देखेंगे कभी चाहिए होगा तो।
और तू वो कह रहा है ना लैपिस। मेरे पे 2 ये भी पड़ी हैं। पता नहीं, पड़ा तो बहुत सारा सामान है मुझे, यह मुझे पता नहीं ये, लेकिन दिखता कैसे है इन्वेंटरी में मैं गया तो। यू डोंट हैव इट येट, वही नहीं है अभी मेरे पे। मतलब नाम ही नहीं सुना मुझे, याद बना पता होता कि अगर होता मेरे पास तो। लेवल 40 तक जाएगा ना आगे से। मैं तभी पता इतना इसका वो नहीं है, +9 इस लेवल। अबे सारे 3 स्टार ही हैं क्या मेरे पे? क्या बात कर रहे हो? 1 स्टार मटेरियल ही नहीं है मेरे पे। मेरी इसकी दूसरी वाली तो C6 हो गई जो जियो है। और मुझे एक ये इसे भी अपग्रेड करना है यार। इसको एक्चुअली एक्सेप्ट Benny's करने के लिए adventure ये team, चाहिए, assemble! ये ट्रेजर होल्डर देते हैं। तो चलते हैं, मुझे 2 ही चाहिए एक्चुअली, तो ट्रेजर होल्डर मुझे आई गेस मिल जाएंगे आसपास ही। ये तो नहीं देती शायद शॉप पे, नहीं ये नहीं देती। There will be side quest to unlock that gadget. The quest name is Treasure Trail. Oh, तो उससे होता क्या है? ट्रेजर ट्रेल नहीं, अभी मेरे पे वो भी नहीं है एक्चुअली। वो भी नहीं है मिशन अभी, वो देखूंगा अगर वर्ल्ड क्वेस्ट में मिलेगा आई गेस, वो अगर मिलेगा तो। ये इंसिग्निया भी नहीं बना सकता ना मैं शायद, तो ये भी नहीं है। गोल्डन रेवन इंसिग्निया बना सकता हूँ मैं, सिल्वर सिल्वर नहीं बना सकता। ओके सो अपना फिर होर्डर्स ढूंढते हैं और क्या करेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड क्वेस्ट है एक। ये ट्रेजर होल्डर का मिलते हैं मुझे, मारने हैं ना, इन्हें मारना मतलब 2 चाहिए मुझे, क्योंकि ना वो फिर अपग्रेड करूंगा फिर। दैट इज द वर्ल्ड क्वेस्ट। यप अबे कितना बोलते हो रे, लिव इट टू मी, हम कर लेंगे। लाइक काफी कुछ कर चुका हूँ मैं गेम में अभी तो। ये अभी तक नहीं खुला मेरा, ऑटम विंड स्कारलेट लीव्स टू अनलॉक, ये वाला मिशन नहीं आया अभी तक मेरा। अभी योई मिया सब कह रहे हैं शायद मिल जाएगी अगले उसमें, क्योंकि मेरा शायद मुझे लग तो नहीं रहा मुझे वो यहाँ का मिलने वाली है। 70 खोलने हैं, 40 40 खोलने मैंने।
तो एक पक्का होता है, तो नेक्स्ट बैनर में मुझे लग रहा है पक्की बात है यूएमिया मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्न मोमेंट ऑफ सिनर्जी, एस्केप प्लान, अपार्ट थ्रू स्टॉर्म। You have to unlock Inazuma। वही Inazuma खोलना पड़ेगा। मैं बट बैनेट को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे ट्रेजर होल्डर ढूंढने पड़ेंगे थोड़े। चलते हैं थोड़ा वर्ल्ड में डिस्कवर करके आते हैं। ये देखो ये सब मैंने जैसे ढूंढे नहीं है ना। चलते हैं यहाँ पे, ये खोल के आते हैं टेलीपोर्टर। जैसे ये 1 2 ये वाला एरिया मैंने डिस्कवर ही नहीं करा है अभी तक। ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। चलते हैं फिर यही डिस्कवर करते हैं। पूरा डिस्कवर भी कर लेंगे और टेलीपोर्टर भी खोल लेंगे, और ट्रेजर होल्डर मिलते हैं तो उन्हें भी पेल लेंगे। नेविगेट ट्रेजर होल्डर यूजिंग योर एडवेंचर बुक। अरे हाँ मैं भूल गया था, मैं वही देख रहा था, मैं भूल ही गया कि हाँ ऐसे भी देख सकते हैं। Where did that come from? यहाँ पे होता है ना ये एनिमीज में, ये रहे। हाँ सही जा रहे हैं, वही मिलेंगे। ये वाला एरिया अनडिस्कवर्ड है एकदम, तो यहाँ पे चेस्ट वेस्ट भी काफ़ी पड़ी होंगी, बट वो सब मैं बाद में करूँगा। अभी मेरा मेन वो है कि वो ट्रेजर होल्डर ढूंढ के अपग्रेड कर लूँगा अपना बेनेट। नहीं दिखा रहा सामने। Adventure time. ये रहे। Get out of here. You're open! You're open! Keep back! You're open! ड्रॉप करेगा या कर दिया? थैंक यू बॉयज, बट यार 2 ही ड्रॉप करे यार। चेस्ट भी कॉमन दी। हाँ ओह मेरा लेवल अप हो गया, नाइस। चलो अभी आगे वाले चलते हैं। ये तो दूर दिखा रहा है, पहले ये चलते हैं, ये वाला भी खोल लेते हैं, ठीक है। ये वाला टेलीपोर्टर भी खोल लेते हैं। इजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना ना एक जगह से दूसरी जगह, वरना मिशन आते बड़ी दिक्कत होती है। अरे यहाँ पे ये भी है, कहाँ पे एक्चुअली? ओह ये रहा। हाँ टावर के ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ ये? सीधा भी जा सकता था। एक और होगा बस यहाँ पे पत्थर। इजी, ये सब जैसे रहती है सही रहता है।
मिल जाती है, थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है फ्री का। और वो कहा था, नहीं देखा था यार, जियोलॉक्यूलस। हाँ वो रहा। ओ ट्रेजर रोड नीचे भी जा रहे हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे हैं। मारो 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 मारो। हेलो बॉयज। My hammer. कहाँ घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? इनाजुमा पजल इज सो हार्ड। हाँ इनाजुमा की पजल क्या है, सब हार्ड है बहुत ज्यादा। Picked the wrong test subject. ओह सिल्वर इंसिग्निया मिल गया सीधा मुझे। अभी ये कुछ नहीं गिरा के गया, नहीं गिरा के गया। आई गेस हो गए, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए अभी तक। चलो अब मेन बस टेलीपोर्टर खुलाते हैं, क्योंकि एक उसने गिराई थी और शायद 2-3 मुझे वैसे मिल गए नॉर्मल वाले, तो हो ही गए होंगे आई गेस। ओ वहाँ पे लग्जरियस चेस्ट है, प्रेशियस चेस्ट है, एंड विद अ जियोलॉक्यूलस, तो इन्हें तो फिल करेंगे। अबे 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 कैसे पागल हो गए क्या एकदम ही? Freeze. कहाँ कूदे जा रहा, कहाँ कूदे जा रहा, पागल हो गया क्या? इजी, इन्हें मारना तो इजी है। हाय अर्शी, वेलकम अगेन। और यहाँ पे शायद और कुछ नहीं था, बस यही था। मैं वही कह रहा यार, चेस्ट थी। रुको इन्हें भी मार के आते हैं। Precious chest. मजा आता है। You should first use Vanet Elemental Burst and others character elemental, it increases damage. हाँ सही कह रहा है। Oh level 4 Exile Goblet. Nice. सही कह रहे हो भैया, इसका डैमेज ज्यादा पड़ता है ना, भूल जाता हूँ लेकिन अबे इतना सारा, इतनी सब चीजें हैं इसमें, क्या क्या याद रखे बंदा। अरे वो 150 हो गया मेरा 100 से। अबे वहाँ पे भी एक वो है, उसे भी मार के आते हैं। वो प्रेशियस चेस्ट है आई गेस, या एक और प्रेशियस चेस्ट है। कैन यू शो रेजर आर्टिफैक्ट? रेजर का आर्टिफैक्ट दिखाता हूँ, रुक जाओ। पहले चेस्ट लेके आएंगे। Freeze! This moment will be frozen. अबे मैं भी फ्रीज हो गया।
रियली? अबे यार ये फ्रीज वाले इसलिए बिगाड़ लगते हैं मुझे। एक उधर से मारेगा, इधर से मारेगा। तुम्हारी ऐसी पीछे पीछे। हो गया बाय। हाँ तुझे रेजर के आर्टिफैक्ट दिख रहे थे ना? ये है रेजर का आर्टिफैक्ट। ये अटैक 467, डिफेंस 82, एलिमेंटल मास्टर 23, क्रिट डैमेज 16.3, क्रिट रेट मैंने भी देखा था आज तक बट सही है मेरा। मतलब रेजर अच्छा है काफी, मतलब काफी डैमेज मारता है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी है सच। चेंज कर दूंगा मैं, जैसे लेवल 4 के डाल दूंगा अभी मैं। I keep watch. जैसे मुझे लेवल 4 के मिलते जा रहे हैं ना, अब जैसे मुझे ज्यादा अच्छे वो मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स। अभी तक मुझे लेवल 3 के मिलते थे, अभी काफी बेटर मिलते हैं। You should give him इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट। है ही नहीं मेरे पे अभी इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट, बस जियो है मेरे पे। तो वो इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट आएगा तो फिर डालेंगे। मैं देख चुका सारे आर्टिफैक्ट, यही सबसे बेस्ट है इसके लिए अभी। मारना क्या इन्हें? I taste blood. Not breaking a sweat. My duty is preserved. I kill you. मुझे खाना बनाना यार, खाना की कमी पड़ जाती है मुझे। मैं पागल हूँ, मैं बना के नहीं लाता। अबे तू रुकेगा, बस यही करता रहेगा। Get out of here! क्या हुआ? हो गया, बस हो गया। ओ ये देते हैं, ये सर्जेंट इंसिग्निया। ठीक है ठीक है ठीक है। प्ले इलेक्ट्रिक डोमेन टू गेट इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट। ओके सही है सही है, खेलूंगा। डोमेन वोमेन करने का टाइम नहीं मिलता, मैं मेन स्टोरी करने पे 4-5 घंटे लग जाते हैं। कौन करे डोमेन वोमेन पर? वही बात है, इस गेम के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। तुम एक्सप्लोर कर रहे हो तो तुम्हें देना पड़ेगा टाइम, या तो तुम लंबे टाइम से खेल रहे हो। मैं तो अभी जैसे स्टार्ट करा है मैंने जस्ट, तो वही बात है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे करने में सब कुछ। ये कहाँ पे है? ये रहा। चलो गाइस ये भी एरिया पूरा खोल लिया। अभी चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि आसपास ही है इलेक्ट्रिक डोमेन से इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट मिलते हैं। चलेंगे भाई, करेंगे यार वो भी। क्या आना था मुझे? सिल्वर। Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Oh, ow! Where did that come from? लेवल 60 होगा बेनेट भी। 10,000। Benny's adventure team, assemble! Oh.
not. अब इसके लिए चाहिए 18 सिल्वर इंसिग्निया। देयर आर डोमेन फॉर एवरी एलिमेंट, एनिमो, जियो, कायरो, पायरो, इलेक्ट्रो। हाँ वो तो मुझे पता है, बट आर्टिफैक्ट्स मुझे अच्छे मिलते ही नहीं, सारे सस्ते आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ओ मिल गया मुझे इलेक्ट्रो डैमेज बोनस, नाइस, ये लगाता हूँ ना अभी रेजर पे। फाइनली एक मिला मुझे, ये रहा इलेक्ट्रो डैमेज बोनस। स्विच करो भाई। और इसे एनहांस कर देता हूँ। लाइक 3 स्टार वाले भी मुझे लगता है उनका फायदा नहीं होता। नाइस, यही कह रहा था ना लगाने के लिए आर्टिफैक्ट, तो ऐसे जियो जो मतलब इलेक्ट्रो डैमेज, इसका अटैक भी काफी ज्यादा है रे। इसका लेवल 16 जाता है आई गेस। You have played domain in high level to get good artifact. Level 70-80 level domain guarantee for 4 star और above artifact. हाँ वेब आर्टिफैक्ट ही तो वो सारे लो लेवल के हैं, इसलिए तो दिक्कत आती है। लाइक 4 स्टार के हैं मेरे पे काफी, बट वो इतने अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। लाइक अटैक परसेंटेज, ये एचपी देता है, ये भी एचपी देता है। एलिमेंटल मास्टरी एचपी 60%, ये सब इतने बढ़िया है ही नहीं। अब ये है, जैसे ये अच्छा खासा देता है समर और मून अटैक, ये जैसे मैं चेंज कर सकता हूँ रेजर से, निंगुआंग की जगह इसे दे दूँ। ये फिजिकल डैमेज बोनस 28.28% है। इसका जियो डैमेज बोनस है तो इस पे रख देता हूँ। कायरो डैमेज बोनस मैंने सही लगा रखे यार सब पे। जियो डैमेज बोनस ये मैं चेंज कर देता हूँ इसके साथ। इसका जो कप है वो चेंज कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है इसके लिए। फिजिकल डैमेज बोनस ज़्यादा है ना इसका, क्योंकि लाइक ये जियो मैं यूज़ कम ही करता हूँ। निंगुआंग है अब तो निंगुआंग ही यूज़ करूँगा मैं। मैंने और सबके तो वेपन भी नहीं देखे, ये मैंने इसे दे रखा है जियांगलिंग को। विदाउट गुड 4 स्टार एंड 5 स्टार आर्टिफैक्ट यू कैन नॉट डू बिगर डैमेज। हाँ वो तो मुझे भी पता है यार, बट मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पे लेवल 4 है। तो कौन ये सही है रे, लेवल 4 पड़ी है इसकी भी मेरे पे। फेविनियस लांस, राइट डोमेन, ओके। मैं सबको थोड़े वेपन अच्छे दे दूं एक बार। लाइक मैंने ये बारबरा को दे रखा है सही में, लेवल 19। यानफी आई गेस ज्यादा बेटर है। बारबरा इज हीलिंग कैरेक्टर आई गेस। लेवल 4 रिफाइंड, लेवल 5 रिफाइंड। ये क्या है? ट्विन नेफ्राइट, पता नहीं, देखने में तो सुंदर है, डैमेज वैमेज नहीं पता।
ओ चोंगिंग को मैंने वेपन नहीं दे रखा, इसे क्या बेल दे दूं क्या? ये भी बढ़िया है, स्काई राइडर बेस अटैक। मुझे पता नहीं चोंगिंग क्या डैमेज वाला है या वो है सपोर्ट एजेंट है, मुझे यही नहीं पता इसका। तो ये रिफाइन कर सकता हूँ बट मैं। रेजर नेट फिजिकल डैमेज, हाँ उसे फिजिकल डैमेज दिया। नेफ्राइट यान्फी को दो, इट्स अ बेस्ट फॉर हर इन ऑल 3 स्टार्स। ओके यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ना इसके वेपन्स का पता नहीं अभी। जैसे ये है, इसमें तो ये कह रहा है नेफ्राइट ये लाइक लेवल 1 है इसका। मैं अभी तक यूज ही नहीं कर रहा इसे ज्यादा। बारबरा को मैंने नॉर्मल बुक दे रखी है आई गेस, इसे स्विच ही कर देता हूँ। बारबरा भी मैं यूज नहीं करता क्योंकि ये हार्बिंगर ऑफ डॉन इज वेरी गुड 3 स्टार शॉट। हाँ हार्बिंगर ऑफ डॉन है मेरे पे। बेल मैंने नोएल को दे रखी है। अबे कितनी सारी हैं ये। इसे रिफाइन कर देता हूँ, इसे लॉक कर देंगे फिर। ये यही करता हूँ, जो भी रिफाइंड होती है ना उन्हें रिफाइन करो और लॉक कर दो, सिंपल इजी। जैसे ये है, ये लेवल 4 रिफाइंड है, इसे लॉक कर दो, ये रिफाइंड नहीं होगी फिर, बाकी सारी डल जाएंगी। जैसे ये भी है, ये लेवल 5 रिफाइंड है, इसे भी लॉक कर दो, बाकी सारी बेकार है। जैसे मैंने इसे लॉक ही नहीं कर रखा, आई ऑफ परसेप्शन। सही है। नोएल को मैंने बेल दे रखी है, तुमने अगर नोएल को यूज करता है, मुझे तो अच्छी लगी थी, मतलब इसकी वो शील्ड बहुत अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा अच्छी है एक्चुअली, काफी डैमेज रोक लेती है। लेवल 5 रिफाइंड हो गई है। ये मैंने आइज ऑफ परसेप्शन इसे दे रखी है निंगवांग। अपने रेजर भैया तो सबसे बढ़िया वेपन चला रहे हैं, इसका डैमेज बहुत है। ये चाहिए यार, ये नहीं मिल रहा है। ये चलते हैं ट्रायल ऑफ ग्राउंड थंडर, ये चलते हैं चलो। डोमिनो फॉर्जरी ट्रायल ग्राउंड ऑफ थंडर। हाँ सैटरडे है ना, तो होगा भी आई गेस। हाय सुपरफास्ट गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, थैंक यू स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। एम्बर्स बेस्ट इज रेवन बो, क्या बात कर रहा है। उसका जो वो लेवल 5 मैंने लेवल 4 की दे रखी है, उसे बो दे रखी है। चेंज करो यार, अपनी निंगवांग का है, निंगवांग बेस्ट है रे इसमें जियो में तो। Don't disappoint me. आपका AR, मेरा AR है अभी आई गेस 34 हो गया, या 34 AR है मेरा। वे हाँ मेरी नई AR खुली है ना, मुझे उसका वो लेना है, रिवॉर्ड लेना है, रुको लेके आते हैं। तो 42, अरे नाइस रे, पहुंच जाऊंगा मैं भी जल्दी, टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी आऊंगा मैं अभी। तो लेवल 4 का बुकमार्क मिला है कुछ तो।
अरे अब ये बताओ, ये कहाँ से देखते हैं? ये जो डोमेन ऑफ फॉर्जरी है ये कहाँ से आएगी? यहाँ से तो मिशन आते हैं, इसमें आते हैं ना डोमेन्स। इसमें ही आते हैं। तो ये है ट्रूथ डोमेन। ओके, ट्रूथ डोमेन ये होते हैं गोल्डन हाउस, और ये फ्रॉम देयर स्पाइरल डोमेन वो होता है जो अलग से जाते हैं। ठीक है। यार उसमें कोई डोमेन लिखा हुआ है, वो तो दिखाई नहीं रहा इसमें। ये करे क्या? हिडन पैलेस इन लियांचान फॉर्मूला। He didn't defeated Animo Cube yet. एक मिनट, Animo Cube ये क्यों कह रहा है? ये इसे मैं एक्चुअली मैं डिफीट कर चुका हूँ, बट मैंने सिंगल प्लेयर मोड में नहीं करा है। चलेगा? इसे मार क्या हो गया? मैं उसे डिफीट कर चुका हूँ, बट मैंने सिंगल प्लेयर मोड में नहीं करा था उसे। कोऑप में करा था। कोऑप में जब उसमें जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो सिंगल प्लेयर मोड करने पे मिलेगा। 2 डोमेन ऑफ फॉर्जरी है, फर्स्ट इज वोल्फेंडोम एंड 1 इज मिंगवांग विलेज। हाँ चलो फिर यही करते हैं, हरा के आते हैं। शायद मैं हरा दूंगा इसलिए, पता नहीं। डोंट जज मी, नहीं हरा पाया तो मैं। फाइट इज अ इजी बॉस। ओके, आई एम कमिंग योर वर्ल्ड, यस और नो। अरे रुक जा, मुझे इसे सिंगल प्लेयर मोड में हराना है। को अब मैं हरा चुका हूँ बहुत बार। अभी आ जाना गाइस, जब बॉस फाइट करूंगा तब आ जाना। अभी तो सिंगल प्लेयर मोड मुझे हराना है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, तो मैं वेट ही करना पड़ेगा। Give up. Your life is mine. अब तो कुछ हो ही नहीं रहा इसे तो, क्या बकवास है। बाय बाय। डैमेज डैमेज भैया, ओ डैमेज भैया, डैमेज दे दिया ये तो गंदा। मैं खाना अभी भी नहीं बना के लाया। जियो से डैमेज क्यों नहीं पड़ा उसे वैसे? अब उसे डैमेज ही नहीं पड़ रहा। ये पड़ा ना अभी डैमेज। आई गेस रेजर से मार सकता हूँ मैं उसे बस, क्योंकि डैमेज ही नहीं पड़ रहा। When he's on his special form, then he gets damage. Oh. ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। मैं वही कह रहा था, डैमेज क्यों नहीं पड़ा? Don't waste my time. अबे 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 मैं ज्यादा दूर चला जाता हूँ, लेकिन उसका डैमेज बहुत ज्यादा है। अरे वो पास में बहुत ज्यादा डैमेज मार रहा है। बच गया। हो गया हो गया हो गया इस बार। स्टैमिना के ऊपर है सब, पता है। स्टैमिना बचाना पड़ेगा बहुत ज्यादा।
अरे रेजर ही मार देगा, ऐसे इजी है। बस मुझे थोड़ा स्टैमिना कंजर्व करना है, काफी इजी है। हो गया, बस जरा सा बचा। क्या करना है? एब्जॉर्ब कैसे करना है? नहीं यार नहीं, ये कैसे करना है? एब्जॉर्ब कैसे करना है जल्दी बताओ। Take those flying things because he will unleash a wave from consuming them, then he will collect those. कैसे कैसे कलेक्ट करना है? कैसे कलेक्ट करना है? अबे यार ये रिवाइव हो जाएगा यार। Open your wing. लेट आया थोड़ा वो रिवाइव हो गया। जंप एंड फ्लाई, हवा में जो दिख रहा है उसको कलर करो। अच्छा वो जो ऊपर जाना है मुझे डबल वो करके, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये सोलो में करा है, सोलो में करा ही नहीं मैंने, सिंगल उसमें करा था, को-ऑप में करा था, मुझे पता ही नहीं इसका। और तुम आते तो मार के चले जाते हो 5 मिनट में। अबे कैसे करना है? समझ गया, हवा में उड़ के ही लेना है, बट वो दो बार ऊपर चला जा रहा है, ले ही नहीं मेरा कलेक्ट एंड फ्लाई है। अब समझ गया मैं। लॉल वो दो बार फ्लाई कर रहा है, मैं क्या करूं उसको बताओ। मैं इजी है वो समझने वाली दे रहा, बस मैंने एक बार जैसे गलती कर दी, अभी तक वरना हो गया होता। और कहाँ है? और कहाँ है? और तो नहीं है। अबे हाँ हो गया ना, अभी लास्ट बार मारना है बस मुझे से। इजी। इजी हो गया। ओह वो मैंने पहली बार गलती कर दी, मैं पहली बार ना 2 बार भी हो जाता है ये। इजी था ऐसे मारना। कुछ मिला क्या? लेवल 4 तो नहीं रहे। हरिकेन सीड मिले मुझे बट एनिमो के लिए नहीं, वही तो मुझे देखो मिलते ही नहीं लेवल 4 आर्टिफैक्ट, सारे लेवल 3 के मिले। अब मुझे वो समझ नहीं आता। देखो एक ये हो गया और मुझे एक और करना है अभी। अरे यार ऑल्ट से होता है, मैं भूल जाता हूँ। देखो ये हो गया, अब मुझे इसे भी हराना है।
जियो हाइपोस्टेस इन सिंगल प्लेयर मोड और सेंड अ वेपन टू फेज 3। फेज 3 पे तो मैंने किसी भी वेपन को सेंड नहीं करा अभी तक आई गेस। जियो वाले को भी हरा के आए क्या? जियो वाले तो बहुत दूर है। इसके वेपन को एनहांस करने के लिए तो ये चाहिए ना। ये मैं देख रहा था, ये ट्रायल ग्राउंड ऑफ थंडर कहाँ पे है? ये डोमेन ऑफ फॉर्जरी वेपन एसेंशियल मटेरियल रिमूवल ऑफ सी मॉन्स्टर आर इन कॉम्बिनेशन देयर सिंस द अदर शोर इज अननोन रीजन without the protection of the seven all lies beyond unknown chaos only power beyond trial ground thunder domain of forgery geo cube attack can one shot you now geo cube it's super strong oh your first animo cube victory हाँ ये मेरी पहली है। ये मिलता किससे है ये जो बोन सी होती है? ये लीवे में मिलती है ये तो पता लग गया मुझे, बट ये किस में मिलता है? चलो ट्रायल ग्राउंड ही करते हैं गाइस, तो खाली बैठे क्या ही करें। मैं जाके सोच रहा हूँ पहले खाना भी बना लूं मैं, क्योंकि खाने के चक्कर में इतना बढ़ता हूँ मेरी हेल्थ ही नहीं बढ़ती। रुको, कुकिंग का मैंने यहाँ मुझे पता है एक जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है। जाके ना भर के खाना बनाते हैं पहले, वरना फाइट के बीच में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो मेरे को 300 HP वाला वो सही तो है कि वो धीरे धीरे बढ़ाता है, बट मुझे चाहिए कि एक बार में कोई बढ़ा दे ज़्यादा HP ना, ज़्यादा बेटर है। हाँ वो डिपेंड करता है, रुक जा, नहीं मैं करूँगा वो तो टेंशन ना लो। ये है ना, ये बना लेते हैं, ऑटो कुक करते हैं। 12 बना दो भाई, जितने भी है सारे बना दो। मैं हेल्थ वाले बना रहा हूँ सारे, माटू साके जो भी है बना दो। प्रोफिशिएंसी लाने के लिए यू शुड परचेज एंड लर्न मोर रेसिपीज। हाँ यार बनाने हो यार, रेसिपीज मेरे में कम ही है, बट सही है, इतना ज़्यादा काम पड़ता नहीं मुझे अभी तो खासकर। दस बनाने हैं इसकी प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, अभी तो मैन्युअली भी कर सकता हूँ बस। हो गया बस, एक हो जाओ चलो। They are 4-star and 5-star recipes. They heal more. हाँ, I know. जैसे ये है ना जेट पार्सल, ये इसके लेवल 4 का ही है, बट अभी तो वो सब है नहीं, तो इसलिए इसी से काम चलाएंगे। और तो है नहीं कुछ हीलिंग का। अभी देखो डोमेन में जाते हैं, देखते हैं कौन से डोमेन में। ये देखो इस वाले हिडन पैलेस ऑफ लेशन फॉर्मूला, ये कहाँ पे आई है? ये वाला डोमेन है। टेलीपोर्ट करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं। अब ये मुझे चाहिए क्योंकि दे आर रेसिपीज दैट इंक्रीज योर स्टैमिना, फ्यू इंक्रीज डैमेज। हाँ वो तो जेट पार्सल जैसे अटैक बढ़ाता है, इसमें है ना। फिफ्टी 59 लेवल में शायद कर नहीं पाऊंगा। 59 आई गेस कर भी सकता हूँ, पता नहीं। मुझे बस बाकी यही दो चाहिए।
ये कोऑप में कर सकता हूँ ना मैं? अगर कोऑप में कर सकता हूँ फिर मैं 59 लेवल वाला करूँगा। तुम आ जाओ एक जना कोई भी। गो टू डायलॉग अल्कोहल शॉप एंड परचेज एप्पल सिडार, इट इंक्रीजेज अ लॉट ऑफ एचपी। डायलॉग अल्कोहल शॉप, वो जो वहाँ पे है मॉन्स्टेड में, वो वाला क्या रहा है? शुड आई कम? हाँ, एक कोई भी एक जना आ जाओ, या दो आ रहे तो दो भी आ जाओ, कुछ चलेगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। डोमेन वाली फाइट करनी है मुझे। जैसे इन मॉन्स्टेड, हाँ। तुम्हें पता है इस पे क्लिक करने से, सिंपल क्लिक करने से तुम्हें पायरोजेम मिलते हैं? मुझे नहीं पता था ये चीज़। लाइक तुमने ये पढ़ा है तो इसके लिए तुम्हें पायरोजेम मिलेंगे। मुझे इतने सारे मिले थे एक बार, एक साथ मैंने सब पे क्लिक करा था। सिंपल बस क्लिक करना इस पे और तुम्हें पायरोजेम मिलेंगे फ्री के, दो दो तीन तीन। सुपरफाइज, तू मुझे ऐड कर लेना, तू यूआईडी तुझे दिख रही है, तू मुझे रिक्वेस्ट भेज दे। तुझे स्क्रीन पे नीचे यूआईडी दिख रही है मेरे, उसके नीचे, लोगों के नीचे। I keep देखो, watch. You पायरोजेम leave, मिले। you call me. Keep back! वेट, या वेट कर रहा हूँ, भेज दो जल्दी। जीन की भी खुल गई स्टोरी, अब इसके बाद वेंटी की खुल जाएगी। चलो सही है। यू आर कंप्लीट, वी विल बी रीयूनाइटेड आर्कर क्वेस्ट। आर यू कंप्लीट? हाँ मैंने वो कर ली कंप्लीट। अब ये चल गई उसके बाद ना मेरी, आप पाथ थ्रू द स्ट्रॉम। और अभी मैं जस्ट वो लेने जा रहा हूँ, ये आ रहे हैं दो तीन जने, तो इनके साथ खेल लूँगा थोड़ी देर, और इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा स्टोरी। मुझे एक्चुअली वेपन अपग्रेड करना है अपना, लेवल 3 एसेंड करना है इसे। रेजर का मैं वेपन असेंड कर दूंगा, तो इसके लिए मुझे बंदे चाहिए, क्योंकि ये जो इसका लेवल है वो 59 है। तो आ जाओ, अगर ये कोऑप में कर सकते हैं तो फिर कोऑप में करेंगे। रिक्वेस्ट भेज दो गाइस, रिक्वेस्ट भेज दो जिसे भी आना है। नमन की तो मेरे पे पड़ी है ये 45 लेवल। बाकी जिसे आना है आ जाओ। हाउ अबाउट ईथर? हाँ ईथर आ गया, उसकी एंट्री हुई अभी। ओह, वो उनका साथ दे रहा है बायस ऑर्डर का, अब इस ऑर्डर का। मैं भी देख के हैरान हूँ वो क्यों दे रहा है साथ, बट दे रहा है तो दे रहा है, उसकी मर्जी।
और मुझे इतना पता चला वो सारे जो लोग हैं जो अबिस ऑर्डर वाले हैं वो सारे जो लड़ाई हुई थी 500 साल पहले वो वहीं उसी के ही लोग हैं जिन्हें वो छोड़ के भाग गए थे, तो वो सारे कन्वर्ट हो गए अबिस ऑर्डर में, मतलब उनके चेलों में। I'm hungry. Let's hunt. Hey. आ जाओ गाइस, आ जाओ जल्दी। Did you see his golden sword? हाँ देख ही रहे। चलो जब तक तुम आ रहे हो मैं एक काम करता हूँ, कोई कैरेक्टर दे दो यार नया। नहीं देंगे यार, हम यार। कंप्लीट वर्ल्ड क्वेस्ट, हाँ यार वर्ल्ड क्वेस्ट करनी है मुझे। सात घंटे में खरीद सकता हूँ, फिर से मैं खरीद लूंगा जितने भी आएंगे। क्रिस्टल प्रिज्म, मिंस ग्रास, अरे इससे भी खरीद सकता हूँ सर ये सब चेन। Raven bow, nice. I also completed 11 world quests in Inazuma out of 26. अरे भाई साहब 26 वर्ल्ड क्वेस्ट है, तो मुझे लग रहा मैंने तो यही की नहीं करी। अरे आ रहे हो क्या? ये कौन है सुपर और ये नमन आ रहे तो आ जाओ। ये मेरी उसकी खुल गई शायद, अब जीन वाली खुल गई है मॉन्चैट की। ये हमारी लीवे की। Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. मुझे ना ये चाहिए, इसका वेपन एनहांस करने के लिए ये चाहिए, तो यही लेने जा रहा हूँ मैं बस। और ये आ नहीं रहे हैं, जल्दी आ जाओ यार, वेट करा रहे हो। जैसे वॉट मून पास, क्या बात कर रहा है सही में। मुझे लगता है पैसा लगाना बेकार है गेम में। लाइक अगर तू खेलेगा आने वाला 8-10 साल तो सही है भाई, फिर तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बट हाँ अगर नहीं खेलेगा तो फिर बेकार ही है। देख बहुत जने होता है ना टाइम पास के लिए खेलते हैं, 2-3 दिन खेला फिर छोड़ दिया, वो मत करियो बस। फॉर भूपा लेडी हद है। भाई ये नहीं आ रहे, मैं जाके कर रहा हूँ। ये जब आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इतनी देर में मैं करके आ जाता, वो भी 1-2।
Your life is mine. इतनी देर में तो कंप्लीट ही हो गया, ये अभी तक नहीं आया। और R49990 प्राइमो पर डे, टोटल 3000 प्राइमोस। क्या बात कर रहा, सही है। सब कह रहे हैं 10,000 से ज्यादा प्राइमोस है इनाजुमा में, तो 10,000 बहुत होते हैं। अरे भाई साहब 2 मिल गए और 3 ये मिल गए, नाइस। मैं तो फिर से करूंगा, ये तो काफी सारे मिल गए। मेरा ऐसे ही हो जाएगा थोड़ी देर में। इन्हें मारना लाइक बहुत इजी है। और Don't waste my time. It's nothing. Freeze! हेलो, कैन यू इनवाइट मी टू योर वर्ल्ड? अरे अभी तो मिशन में हूँ मैं। रमन देख रहा है तो स्ट्रीम। ऑल इनाजुमा प्राइमो जेम स्पेंड ऑलरेडी डूइंग बट शी डिडंट कम। सैड। Dodge this! Don't waste my time. इजी। 3 और 2 फिर से मिल गए, नाइस। आई गेस हो गए होंगे मेरे पे 2 2 4। एक था ना मेरे पे, एक क्राफ्ट कर लूंगा मैं, अगर नहीं भी हुआ तो सही है, काफी हो गया अभी तो। इसका वेपन जो है मेरे पे 5 हो गए, नाइस। तो मैं एक वो कर सकता हूँ, अभी क्राफ्ट कर सकता हूँ। चलते हैं लिए। चीज वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टार डीपीएस बट सैड फॉर मी। सही में बहुत सही डीपीएस है, सही में मैं अभी इससे ही तो खेलता हूँ। चलो एक और हो गया। नाउ आई कैन अपग्रेड रेजर का वेपन। अबे कितना सब पड़ा है रेवन बो। अभी ये रेवन बो मैंने लेवल 5 कर दी क्या? ए रुक ना। हाय नमन, अरे तेरा मैसेज आया था ना अभी, रुक जा, मैं उसमें था, डोमेन में था, इसलिए मैंने वो पढ़ा नहीं। इसे करते हैं एनहांस, करते हैं रिफाइन। आई गेस मैक्स चाहिए, नहीं मैक्स तो नहीं है। ये फेवेनियस वॉर को है और हाँ बाकी सारी मैग्स हैं, इसे भी लॉक कर दिया, बाकी जो लॉक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लेवल 3 की बुक तो कौन ही चलाएगा, तो रियली वेपन लेवल 5। हाँ मेरे पे पड़ी है लेवल 5, ठीक है। बाकी जो सिंगल सिंगल है मैंने वो सब लॉक ही कर दी थी, तो यही सब है जो है। ये भी नया है, ये वाला वेपन मैंने चलाया नहीं अभी तक।
ये लेवल 5 है, ओके। ये भी लेवल 5 है, ठीक है। एक्चुअली ये भी लेवल 5 है मेरे पे, ठीक है। इसे भी हटाओ फिर। मुझे इसे करने के लिए अभी काफी चाहिए रे, और 24 है। चलो गाइस अभी करते हैं, मेन स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आप पाथ थ्रू द स्टॉर्म, नेविगेट। मैंने वेपन भी अपग्रेड कर दिया और मुझे नया मिल गया होगा यार। बस मुझे अब ये जियो हाइपोस्टेसिस जो भी होता है इसे हराना है। लुक एट द व्यू, ओके लेट्स गो। जी आप इसे स्ट्रॉन्ग, हाँ वही ना, उसे इसलिए मैं लड़ने नहीं जा रहा अभी। थोड़ा लेवल बढ़ जाए तो जाऊंगा। और चलो मुझे सिंगल प्लेयर मोड में हराना है, तभी होगा। बी केयरफुल व्हाइल फाइटिंग इट। हाँ अभी लड़ ही नहीं रहा मैं, स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा 70-80 लेवल हो जाए फिर जाऊंगे उसे आराम से मारने। अब उस पर टेलीपोर्ट ही था लॉल, वो छुप जाता है उसके उसमें ऊपर। चलो गाइस आखिरी लुक हमारा शायद ये लियो का। Okay. Paimon never imagined your brother would have sided with the abyss. Well, keep your chin up. कुछ तो रीजन Paimon होगा। believes in, and when the going gets tough, the tough get going, right? He said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets he still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. I'm glad to have you as a guide, Paimon। सही में Paimon boost करती है बहुत Where ज़्यादा। should we go next? If we want to continue with the journey, I still need to find the you're the god. god that took your brother away in the first place? Yes. You're right. After all, everything that followed, all this confusion. Which traveler you it all like started more, with Animo और her. Geo? मेरे हिसाब से Animo, क्योंकि काफी ज्यादा काम आता है। वो विंड यूज करना हो, और अगर वेंटी हो तो फिर तो बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि वेंटी वो अपने आप विंड वो बना सकता है ना, विंड सोल जो होता है उससे उड़ के फिर तुम जा सकते हो कहीं पे भी। वो तो बहुत ज्यादा काम आता है। आई नीड आंसर फॉर फ्रॉम हर, आई नीड टू टीच हर अ लेसन शी वोंट फॉरगेट। Yeah, Paimon bets she's the key to understand. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... लेट्स गो टू इनाजुमा गाइस, लेट्स गो। Paimon एक्टर करो, doesn't think we can एक्टर करो, simply ऐड walk करो। into अच्छा कर पाओगे? Inazuma. Zhongli said जियो it टू was a मच हायर closed डैमेज। mission. We'll हाँ have to find some डैमेज other ज्यादा way जियो in. करता है, लेकिन Why एनिमो don't we काइंड ऑफ ask वो है। someone from Inazuma how to gain entrance? आई एम श्योर देयर इज समवन वी हैव मेट। Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko and Leo. चलो गाइस इनाजुमा की जर्नी हमारी She's स्टार्ट from होने वाली है। Inazuma. Let's यप see what she has to say. लेट्स गो, इनाजुमा की जर्नी स्टार्ट होने वाली है हमारी अब। ऑटम विंड स्कारलेट एंड लीव्स, यही वाला मिशन हमें करना था योइमिया के लिए। तो अब ये हम कर लेंगे तो हमारा, सॉरी योइमिया नहीं, एक्चुअली क्या नाम है उसका, बारबेडोस, क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया। बेडू बेडू, हाँ इसके लिए हमें ये करना था, ये वाला कंप्लीट ऑटम विंड स्कारलेट लीव्स टू अनलॉक। तो हमारा बेडू खुल जाएगा। In a trade war, the perfect कजुआ तो contract भाई, is कजुआ बहुत ओपी है। कजुआ तो बहुत ज्यादा ओपी है रे। मैं नया नया था गेम में, मुझे पता नहीं था, वरना मैं उसके लिए भी ट्राई करता खोलने का। बट वही है, नए नए में खोल नहीं सकते ज्यादा।
तूने रिक्वेस्ट भेज दी क्या? हाँ भेज दी इसने। प्रयास गेमर या पा गई। कर लिया रे एक्सेप्ट तुझे। चलो गाइस। अभी मत भेजिए वरना रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी मैं स्टोरी मोड कर रहा हूँ तो स्टोरी मोड को-ऑप में नहीं होता तो इसलिए। आओ जाओ क्या? नहीं अभी स्टोरी मोड कर रहा हूँ मैं। इनाजुमा जाना है आज, मैं कैसे करके good जाऊंगा? fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? आत्सुको We यही है ना? wanted to ask, how do we get into Inazuma? यप। Oh. मैं जब So बॉस फाइट that's करूंगा why ना you're अभी here. तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा फिर तब आना। There is a way, बॉस फाइट करनी है We क्योंकि came to the मुझे right person. but the chance of success is incredibly small. Incredibly small. Then how did you get out of Inazuma in the first place? सही बात It है। was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and freshwater supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the मैं end. जाके मरा ना तो मैं बेटा Then गाली दूंगा। I blacked out. कहीं जाते ही मैं But डेड। to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Did someone from Leo save you? Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. That The was fair। atmosphere is so stifling. सब कह रहे हैं बहुत The ज़्यादा Kanjo डिप्रेसिंग सा Commission माहौल है वहाँ subjects पे। everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. Okay। I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission Inazuma deadly, is to हाँ वही तो। conduct मुझे लग rigorous रहा है वो जाते ही identity मरूंगा। checks on all पक्की बात। individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision वो Hunt जो हम Decree. क्राफ्ट कर सकते हैं ना वो They जो act like the पोशन से है executive आई गेस arm मुझे of the वो बनाना Raiden पड़ेगा। Shogun's rule. इवन हाई लेवल प्लेयर्स Loyal, हैविंग डिफिकल्टी। yet हाँ unfeeling. भाई। It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all So hope level for the 90-90 वाले future. अगर नहीं खेल पा रहे तो What I हम तो mean क्या to ही say खेलेंगे। is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. There are answer to questions I must know there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Inazuma बंद है क्या एकदम? Seems like तो they भी नहीं जा really सकता don't वहाँ want पे। anyone setting foot in Inazuma, huh? But there is a place for outsider to go, right? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. इसने तो पूरी डिटेल ही दे दी एकदम। The raft And their god is even more sounds a deadly. little The boss on fight was dangerous amazing. side. Oh, सही है Plus, रे। Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux Fleet if they have some way of getting you to Inazuma. Hello? They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. अबे रात हो गई But बोलते it's बोलते। an armed चुप fleet, हो जा तो। right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way.
It seems like our only The option. Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. एक मिनट रुकना गाइस, 1 सेकंड रुको बस। मैंने कहाँ भेज रखा है? अब बेटी आएगी, गो टू शिप। हाँ शिप पे जाना है। एक मिनट रुक जा बस, मुझे एक्चुअली कुछ काम है, फोन आया अभी। हाँ हो गया, चल लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं। बेडू से मिल रहा है मैं। चलो बेडू की भी एंट्री हो गई। लेट्स गो गाइस। अबे ये कहाँ जाना है भाई साहब, इतनी दूर? Freeze! डैन 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 डैन। मैं यहाँ पे क्यों आया मुझे नहीं पता, बट आ गया मैं। चल यार, स्टैमिना बढ़ा। ओह जियो से जल मिलेगा, नाइस। ओ सिली भी है यहाँ पे। हेलो सिली। चेस्ट मिलेगी, चेस्ट मिलेगी फ्री की। चेस्ट लेके चलते हैं। यहाँ से नहीं चढ़ता। और ऊपर जाना है क्या? या चलो मिल गए। हाय कपिल, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। अबे कैसे जाना है वहां पे शिप तक? उड़ के जाना है ना? ये तो काफी दूर था रे। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, परे हो जाओ यार, परे हो जाओ तुम। Dodge this! बेल्ट खा तू। ये ऐसे जाना है? मैं तो उड़ के सोच रहा हूँ जाने की। अरे भाई साहब, 3-3। तुम पागल हो गया? ऊपर क्या है ऐसा? मैं तुमसे लड़ ही नहीं रहा, मैं बाढ़ में जाओ। ओह स्काई राइडर स्वॉर्ड। चेस्ट भी है गाइस, उन्हें मारना ही पड़ेगा। उनसे लड़के जाऊंगा। यू कैन ग्लाइड यूजिंग एम्बर। मैं एम्बर ही वही सोच रहा था, एम्बर यूज करने की। एम्बर का स्टैमिना कम जाता है ना ग्लाइड करने में। अबे अबे यार ये बकवास है। यहाँ पे ये कैसे लूं मैं? कोई आइडिया कैसे लेना है ये तो वेंटी। अरे यार नहीं रे, वेंटी चाहिए क्या इसके लिए? अब मेरे पे एक और आइडिया, या तो वेंटी नहीं, मैंने शायद उसे चेंज कर रखा है, बट रुको रुको फिर से आएंगे। अभी मैं मारते हुए जाऊंगा वापस। एक मिनट रुको।
This world is full of जियो ट्रैवलर मेटेओराइट, हाँ वही कर रहा हूँ मैं, समझ ही गया था मैं। अरे आ गया तुम्हारे भाई को भी, भाई पीरो बन जाओगे, बस थोड़ा टाइम रुको, एकदम पीरो हो जाएंगे फिर हम भी। हेलो प्रियू, मैं पिछली बार कहाँ से गया था, मैं तरह घूम के जा रहा हूँ। हाँ उस साइड से गया था मैं, गलत आ गया। मैं आया तो अभी भी गलत ही शायद, नहीं सही आया हूँ, इधर से इधर जा रहा था। हो जाएगा इस बार मैं मारते हुए जाऊंगा, वो चेस्ट भी ले लेंगे ना, आई गेस प्रेशियस चेस्ट थी तो वो भी लेके चलेंगे। अबे छोड़ दो पीछा, मुझे पार्टी सेटअप करने दो यार। पहले से पकड़ो, बिना शील्ड वालों को मारो पहले। कहाँ गया? What's the hurry? Don't get frostbite. Oh, easy. अबे तो इसकी हेल्थ देखना, ओ भाई साहब 12,000 से 2,000 हो गई सीधा। सूट का चेस्ट तो खुल गई होगी आई गेस, या खुल गई। मैं कहाँ से चढ़ा था, यहीं से चढ़ा था आई गेस। डन, ये भी। और अभी पार्टी सेटअप करते हैं और एम्बर लेते हैं इसकी जगह। Leave it to me. एंड इसकी हेल्थ ही नहीं है एम्बर की भी। लेट्स गो गाइस। बैरेट का क्यू यूज करना का हीलिंग में, हील के लिए, हाँ वो तो पता है मुझे, उसका काफी हील होता है और एक्चुअली, बट अभी फाइट वाइट में नहीं था तो इसका खाना ही यूज कर लो। अभी तो किसी से भी हो जाता है, एम्बर की भी जरूरत नहीं थी,
लाइक कोई सा भी किसी भी यूज हो जाता, इतना ज़्यादा स्टेमिना गया ही नहीं। अबे यहाँ पे कहीं पे वो है जियोलॉक्यूलस, कहाँ पे है कहाँ पे है? All clear as far as the eye can see. ऊपर, हाँ ऊपर ही जा रहा हूँ मैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? पता हमेशा सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, कुछ ना कुछ दे देता है कोई ना कोई। मतलब ओ भाई बच गया, अभी मैं नीचे कूद जाता। ये रहा। All clear as far as the eye can see. यहाँ पे कौन अच्छा लगेगा? लेडी निगमा लगाते हैं, रुको फोटो लेते हैं। निगमा का है। Understood. बैनेट। I won't hold you back. कहीं बढ़िया सा व्यू आ रहा हो जहाँ। All clear as far as the eye can see. एक और लेजेस भी रहेगा। अच्छा कहाँ पे है? लेट्स गो। बढ़िया पिक आई यार। चलो अभी उतरते हैं। लग्जरियस चेस्ट कहाँ पे है? Get killed by a boar. Secret achievement. क्या बात कर रहा सही में मुझको? You arrive on board the ship. Yup. You are the traveler. What are you doing here? I'm looking for Bedu. Looking for the captain. Does she look like she's someone you just come looking for? As you please. और क्या? Oi, someone get over here. Tie this stowaway up and feed them fishes. Alright. What's all the ruckus? This troublemaker snuck in here. Said they are looking for. Well, you know. I will wager, and I thought I'd just deal with this for Bedu. बैक साइड में है। ओके अभी जाऊंगा मैं। ये तो ये अपने आप स्टोरी लग गई। बैक साइड में कह रहा था। Investigate. Ahoy there, mateys! Time to set sail! बैक साइड में कहाँ पे? तो ये कह रहा है यहाँ पे चेस्ट है कहीं पे, लग्जरियस चेस्ट। देखो मैं उसे बिना छोड़े तो जाऊंगा नहीं। Secret achievement, go to settings, do sound low and up, keep doing it and it will unlock achievement. You could hear Fireman all along. हाँ लोग ग्लिचेस बता रहे हो ये और कह रहे सीक्रेट अचीवमेंट है ये। अबे ये तो बहुत सारी चेस्ट है। अबे तीन चेस्ट पड़ी थी, मैंने देखी कैसे नहीं। और तो नहीं है यस। यही कह रहा था ये वाली चेस्ट ऊपर। ओके इसमें ही ऊपर कह रहा है क्या? अबे यार रह गया थोड़ा सा स्कैम। इससे भी कर ही लेते हैं बात, तब तक स्टैमिना बढ़ जाएगा। ये लेवल 4 के या वो ना आर्टिफैक्ट गिर देते हैं, इनसे बात कर लिया करो।
वैसे तुम्हें पता ही होगा बट तब भी। निंगवांग वाज सो पुअर व्हेन ही केम। तू बता के आई थी वो। Waves are as calm as always. ऊपर तो आ गया मैं। कहाँ पे है रिचेस? इस वाले उस पे है क्या? रुक जाओ, चढ़ जाते हैं इस पे भी। ओबे बे भाई बच गया। मैं वापस आना पड़ता अभी। ये रही अब 10 प्राइमो मिले और कुछ नहीं था। सही है। नहीं बहुत सब कुछ मिला। स्काई राइडर, ग्रेट शॉट, एक्साइल, वो काफी कुछ मिला। चलो गाइस अभी करते हैं मेन अपना काम। हमें बेडू से बात करनी है कहाँ ये? ओ हो रही। चलो बेडू की भी एंट्री हो गई। Who have we got here? She also Wait, tried to I sell her know vision you. for money. You're that traveler, For aren't you? money? Yeah, The one who but, fought same. against the Fatui and Osail, right? Have we met? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. ये तो लग भी रही Judging by the pirate clothes है। on your back and this floating thing, I guess that time has come. इस शिप वाली लग रही pirate लग रही है The एकदम। name's not floating thing. It's Keishing also pirate. tried to destroy her vision. She don't really like God. ये सब internal politics तुम्हें कैसे पता है इतनी सब? You two Story है give क्या ये off सब? not only the essence of wind and earth, अब ये but कौन है? also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest नया character है compliment क्या कोई? Clement's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. Okay. This Kazuha. young man अच्छा is ये Kaidahara क्या? Kazuha, a temporary Oh. addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead अच्छा of यार ड्रेस words. पे मैंने देखा ही नहीं। With पत्तियों this से नहीं है fine ship काजुआ। and the soft sea breeze, काजुआ 5 star। would it not हाँ। be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, ये तो हमें I'll फ्री give में you a मिलेगी ना chance to बेडू। perform. मिला Only क्या? if the मैं mood ऑफलाइन takes हो me, गया of था। course. Poetry for poetry's नहीं, नहीं, sake तू नहीं आया रे, tends अभी to तक। lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially काजुआ seeing as बढ़िया है। our great काजुआ का hero मैंने here यूज करा might be था, in ट्रायल करा attendance. था, मस्त मजा आ Oh, गया wait था। a minute. What's the clash? कैनेडियन ईथर। Also, just to clarify, by great hero, do you mean? Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There are two important rules. Competitor One, must be renowned fighters. competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out too. You can't take part if you've got a vision. मतलब अंधे होके Otherwise, things करेंगे। get a little ओह अच्छा विजन वो वाली। one-sided. I don't have a vision but You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. सही बात And है, with सही बात Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout है। this विजन time. तो वो वाली हो गई ना जो वो जो We didn't come here to take Purple, part purple in सा a कर देती martial है सब। arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the Kazuha prize is this fun time to round use is character. He can jump particularly very sought high after. and then dash and Get give this. maneuver damage to It's a enemies। masterless काजुआ बढ़िया vision. मैंने ट्रायल Supplied में by यूज करा था myself, मजा आया था। as a matter of fact. हेलो बाबू If the भैया हेलो tournament champion can डच्चा। reawaken that vision, मेरा नाम यूही it चा इसका belongs नाम to them. डच्चा। Is there Welcome to the really stream, such bro. thing as a masterless vision?
When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. Hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. To be honest, I'm not interested. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. You just want her to take part. What's wrong with that? The more talent. What are we gonna चलो यार लड़ाओ मैं मारूंगा अभी देखो. Let's give it a shot. Great. It seems like it. चलो आ जाओ अभी गुद्दी पेलते हैं. DOC Celestia कहाँ है अभी ये? अबे इतनी दूर कहाँ चला गया ये? क्या मजाक है? अबे इतनी दूर कहाँ पहुँच गया ये? Kazuha is wanted in Inazuma. ये चोर हो रहा है क्या? लग भी रहा है शक्ल से. अच्छा तुम ये बताओ मुझे एक चीज बताओ थोड़ा रिसर्च करना इस पे कि मुझे मतलब ये क्या नाम है इसका ये कायरो के लिए मुझे चोंगयुंग रखना चाहिए या फिर केआई रखना चाहिए कौन सा बेस्ट है What's the hurry? Look top of the monster you can see Celestia. Oh. जो भाई वैसे बोला ये बताओ एक बार मुझे क्या बेटर है क्या ओके फिर क्या ही रखते हैं The wind. चोंगयुंग स्वॉर्ड और क्लेमोर को कायरो से अफेक्ट करता है हाँ वो क्लेमोर करेक्ट है Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? कितनी सारी पजल डाल रखे हैं इनमें हेलो हाँ तो मम्मी से बोल दे ना मैं ऊपर स्ट्रीम कर रहा हूँ Where did that come from? तो ज्योति से बोल दे I thinking to build Cairo dialogue मतलब क्या हम कैरेक्टर्स की एबिलिटीज भी चेंज कर सकते हैं क्या ये कब हुआ No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. यार ऊपर वो भी था हाँ आ गया ना जियोलॉक्यूलस देंगे ये भी और यहाँ पे सीली भी होगी आसपास अबे ये तो बहुत वहाँ पे है सीज ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स अभी तो पहले वो लेके आएंगे भाई वो जरूरी है चल बैनेट चढ़ जा चल स्टैमिना बढ़ा ले गिर जाए चोंगयुंग आई थिंक बिल्डिंग है बहुत सारी
Chongyun E skill make normal attack to Cairo attack. मैं फिर किया को अपग्रेड कर लूँ ना, मैं वही अभी इसलिए मैंने रोक रखा है, किया को मैं अपग्रेड नहीं कर रहा, मुझे वो नहीं है अभी कि कौन सा वो करना चाहिए मुझे। अबे यार ये अटक जाता है। चोंगयुन मेरा मेन डीपीएस है, फिर नहीं डीपीएस मेरा रेजर है, तो फिर नहीं करूँगा मैं, वो क्लेमोर वो है ना। बट आई चूज किया इज बेटर फॉर मी, मेरे हिसाब से भी मेरे लिए किया ही बेटर रहेगा। देखते हैं बाकी वो तो टाइम बताएगा। एक बोरा, एक और होगा कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा। तो बोरा एक और दिख गया, चलो हो गया। Adventure time. हवा हवा तो हवा मुझको मिला दे, चला जाओ। कॉम्पिटिटर्स आए करने हैं, बेनेट की एबिलिटी दिखाना। You bet I am. नहीं दिखा रहा, names down yet? चल। Yet, but I am. Have you put your names down yet? Not yet. We are just wanted to take a look around. Well, I'd have a look at the Clash as a comprehensive. Nobody. Yeah. फालतू की साइड छोड़ी है Me? ये। Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat What? You? Not to mention, they tried to sneak. I planted a left hook. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurt. I'm not saying I came. But for us, I'll see you in the arena. आज भी किया बुल बैनर पे। हाँ आज भी किया मैंने, एक किया शायद आज तो, और नहीं किया, अभी एक और कर लूँगा। चल चल तेरे बस की नहीं है, तू तो शक्ल से। That's right. Nothing beats real life at तेरे this बस की नहीं है। tournament. Exactly. his master of Famous. He's the founder of the Ling Shan. You probably... He's got to be to the Ling Shan. forced to It's a type of breathing. For example, our... One Skip कर रहा हूँ, time, he sent a फालतू बकवास challenger है ये। flying into the क्या air मिला? without कुछ भी lifting नहीं a मिला। finger. एक में क्या ही मिलता है? Sure is. We're clear. there's a tuition. Of course. अभी नहीं मिलेगा मुझे लगता है, But काफी he- मुश्किल है। recently आया का though- तो नहीं So, मिलेगी। if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to... Exactly. Folks will come from far and wide. See you in the... चलो 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 बकवास कर लो। ये कितनी बकवास मिलते हैं? डायलॉग लिखने वाले में भी हिम्मत है, इतनी डायलॉग लिख देते हैं। Hey, youngster. If so, So you're also you better Genial. believe it. From ये me, कौन है? obtaining a... No. I know how that's... I've passed every... In most people, a vision. you have so much self-confidence. That's not important. I've also brought a lot... Of course, I also put it... Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition चल routine. चल इसे तो उठा It's के रख not too दूंगा मैं। long now, but... अब बालक है ये। नहीं अब फाइट So, मिलेगी to करने को। recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just Chinks Village arm wrestling Really champ. Next, average. please. What's your name? I'm Wait. Yuicha। Is it really बहुत that... हार्ड है, क्या बात कर हार्ड है? Aren't they a vision bear? I have to ask. It's really hard. The one that spoke with Lady Kuching. Oh, I Kuching. trust you were aware that, really? Yep. She My apology. It's just a form. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? I have got defeated. I know. I have defeated Fatui Harbinger. I have saved Divalin. I am the honorary. Yeah, put that down. And also defeated the Fatui Harbinger child. Whoa. Might as well declare her the champion. I wonder if it's too late to withdraw. Oh. Okay,
Right. Your registration. A great hero. So Oh, we're not here. there's another prize too. Oh, first I. Beto must have up. But why would anyone want to go somewhere I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then. Everyone's misunderstanding the situation. Well, I'm sure a great hero has an important reason. Anyway, the Hey, so even though you... So Paimon thinks you probably In any case, looking at the competition... All right. अबे skip करो You यार. seem like you're लड़ाई ready to कराओ. go. Are you ready to compete? Good. Yes, I'm ready. आ जाओ. क्या मैं elemental side use नहीं कर सकता अपनी? Our next competitor is seen by many as the Oh, favorite Messi to use win कर सकता this हूँ. tournament. फिर तो hard है, फिर Her तो hard है. first bout begins now. भाई level 75 है उसका. Seems like you got a pretty good chance of winning this thing. You? You're the hero they're talking about? Come on, let's go. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. ये तो easy था कि क्या था? बेडो को इससे लड़ाई करा दो चलो बेडो से. नहीं hard नहीं है मजाक है ये. So, what do you think? Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from... Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than... So, come on. All right. You fought well. All right then. काजुआ से लड़ाई कराएंगे क्या? And They can't since beat you signed travelers. वही up, तो ये तो we've बहुत had ताकत many वाला है. others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure... For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting. So, I'm putting you straight... This सीधा is how semi-final में? besides, at your level, Has even fight a you would have god. made it अभी to तो the इनाजुमा semi-finals बुलाएगा anyway. आपको. तुम डरा रहे हो यार. मैं All निशान right. मार दूंगा. Your opponent is finally We're 70%. finally here, folks. The rip... Your opponent has fought. You may well be strong. Very well. All right, that's enough. Your opponent in the semifinals is new to the crux. I do not doubt your... Relax. My girl... Okay. लड़ाई कराओ यार. फालतू क्या दे रहे हो मुझे? Oh, At level last, 90. the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. क्या मजाक चल रहा है क्या ये सही में? लेवल 90 का कैसे है ये? I'm sweating all over. It's a good feeling. और तलवार से काट वो कैसे नहीं लगे? कट क्यों नहीं लगे? Congratulations. I was beaten by the अभी तक तो best. खूनम खूनम जाना I चाहिए need था. to train harder. Right. From... If you had a vision, you'd definitely be one of the... I wanted a vision once, when I was a kid, but mine never came. I lost interest eventually. Wrong sheet. अरे चल चल चल. तेरी दुख भरी दास्तान मैंने सुन ली. Only in मजाक ही you है. have सही the में मजाक chance है in यार the ये तो. future. By the way... Whether there'll be a... So don't get... चल चल चल. परे हो यहाँ से. अभी कौन आ रहा है? Maybe we should ask around. Ah, it's you! I myself... Aw, Why, yes. I faltered for given my stature. Still, I'm sure... चल 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 चल. hey there. He tried to use force. His opponent was. Why don't you dodge? They ask. Because to not dodge. Don't even get me started. I don't dare tell my mat. Sorry, I shouldn't be. Oh. Thanks. We still haven't got any useful information yet. हम तो सेमीफाइनल में थे. हम जीत गए मतलब फाइनल. You gave an outstanding... I could sense that you're... But you were quick to adapt and managed to claim victory over your... In fact, I discerned this not from what I saw. He's right. But in my case, I was purely I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the fight. Not exact. As for the guy, what's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? It's vital that we If that make is it the to case, I haven't properly... Yeah,
It is true that I am versed both in... I do not mean to flaunt my martial prowess. Given your talent... Hang on. Don't... Gathering intelligence. Besides, our favorite here has fought many battles on the... You betcha. Wait a second. We never told you that we've been... However, there is only so much that can be discerned from these traits. Come with me. Okay. चलो काजुआ से लड़ाई करा रहे हो क्या? अबे यार कहाँ 250 मीटर भाग गया पागल सा। और यहाँ पे सीली थी, देखो मैं कह रहा था ना आसपास होगी ये रही। Reporting. जैंगलिंग भी बढ़िया है वैसे अगर मल्टीपल डैमेज देने ना इसके लिए। चलो काजुआ पे चलते हैं। पीवीपी अवेलेबल नहीं है भाई, काजुआ से कैसे लड़ोगे? हाँ वही तो यार, मजा तभी आता ना। अपने अगर हम पर्सन इसमें अगर वही है ना मल्टीप्लेयर मोड ला देना बहुत मजा आ जाएगा गेम में। Adventure time. कि लाइक तू अपने 2-3 कैरेक्टर्स लेके 2 कैरेक्टर्स इवन चलेंगे, तू 2 कैरेक्टर्स लेके मैं 2 कैरेक्टर्स लेके लड़ाई कर रहे हैं भाई, मजा आ जाएगा उसमें। Adventure time. तो लाइक उसके रिवॉर्ड्स अलग करते हैं चाहे गेम से रिलेटेड ना हो बट Get out of here. Take cover. अबे ये तो डैमेज नहीं करता इसमें। बट मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Multiple, is that correct? Yeah. So you already knew. Paimon knew that you were hinting at something. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. Any reaction on Zhongli's trailer? Zhongli का भी trailer आया क्या? क्या बात कर रहा है? Yes, but how did you know? When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I've been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. As crazy as all that sounds, My humble abilities are negligible compared to your incredible. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent. Like that. Hey, stop evaluating! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's nothing really. Paimon just told her whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to... Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such a... However, I still wish to have the honor of seeing how you... Of course, I too shall share with you all that I've looked... Now then. चलो आ जाओ। अब बैटल होगी क्या? अब किससे हो रही है? Defeat the monster to show Kazuha your elemental ability. अच्छा इसमें यूज कर सकता हूँ।
भैया जी आगे स्वाद मेरा तो C3 Your बेडू मिल गई skills in C3 battle are ये कैसे मिल truly गई beyond Your opponent is skilled at बार controlling कहाँ his से- दो बार breathing कहाँ से and मिल गई तुझे maintaining और? balance. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect please, save your thanks. If anything, the world is a मेरा truly... C2 You दो बार seem कहाँ से मिल kind गई of तुझे बेडू obsessed with visions, but I desire to know, and what influence... My apologies. For allowing me the honor of witnessing... So that's what you're curious about? As you well know, visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions मैं यार confiscated 56 पे हूँ inexplicably, 56 sometime in the outset. Not to mention, she sounds less like an. as far as I know, Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within. It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot. Oh? Have you encountered the नाइस Electro सही Archon है before? 56 तो 60 लेवल मैक्स नहीं हो गया हो ही जाएगा थोड़ा टाइम में हैव यू एनकाउंटर्ड द इलेक्ट्रो आर्कॉन बिफोर With time, we will change. But the Shogun will remain the same. राइडन शोगन If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. सही बात है सो यू स्टार्टेड एट रिलीज सही मेरे तूने काफी पहले स्टार्ट किया होगा 56 The time for your... Oh, right. We got so. If you have no other matters to attend to, then we can दिसंबर return भाई together. साहब 5-6 महीने हो गए खेलते हुए Very well. Let's go. आई एम अप्रैल मैंने तो अभी करा यार 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले सॉरी Never mind. We can start by. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the club. We've seen many exciting battles today. Now, I'd like to introduce. She strikes fear into the heart. Wow! I'm sure everyone. But today's final round. As for our other combatant. Come on, what could be taking him so long? आया ही नहीं क्या वो Apologies. जून Everyone तूने जून just में स्टार्ट sit किया tight. अरे सही है ना मैं ही सबसे लेट हो गया मे बी दे गॉट द मैच टाइम मे बी दे आर टू immediately to show for the final We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone चाइल्ड the बैनर match. चाइल्ड का बैनर पहले आया था ना Wait a moment. Captain Beto, perhaps we should... Traveler. अब क्या हुआ Let me see. It's gone all right. वो The चुरा के vision भाग is गया missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a My thing first in broad character is daylight? Jinyan, second was Noel. मेरा पहला कैरेक्टर नोएल था जो मुझे मिला था चाइल्ड फिर आया था We don't know when it was taken मेरा पहला exactly. नोएल है No need to worry. The vision was the pro... Well, if you... I'll stay here and try to... If you would, please come with me. But Come with me. I can... need to follow the wind current location चलो a wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. जियो सिजिल मिल गए दो अबे टाइम था मैंने देखा ही नहीं बाबू भैया मैं प्रे करता हूँ कि आपको शीशी मिले शीशी बढ़िया आएगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाली मुझे पता है मैं उसमें इतने सारे खोल चुका हूँ The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Cool it!
give up. Can't run from death. बेटा बालक हो तुम बालक। ये तो बहुत सारी चीजें देता है, नाइफ फाइव भी दे देता है। डक्चा which one is your favorite event? हाँ बहुत बढ़िया। No I stand at 20 ton banner I remember। मेरे पे अभी तो I guess नहीं है कोई। मेरे पे नहीं है अभी कुछ। अभी 7 घंटे में नया वो आएगा तो खरीद पाऊंगा मैं। लोअर हायर क्या हो रहा है ये? Confirm the clues with Kazuha. अबे टक कैसे गई तुम जा। No, can't play that even. Wintrace क्या? Elrich, did you play? अभी कहाँ जाना है? पता नहीं गाइस, समझ नहीं आ रहा। It's nothing. Let's light it up. Oh, ये रहा। The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. सही बात है और क्या? Easy, use your elemental sight. हाँ वही। नहीं पहुंचा मैं शायद। गलत कर दिया मैंने। नहीं पहुंच गया। Don't waste my time. ये क्या बकवास है? Your life is mine. Dodge this. This moment will be frozen in time. इसी तो शील्ड गई। ये तो मर गया। इसकी बारी है। शील्ड तोड़ने के लिए सही है भाई। बैनेट का बहुत डैमेज मारता है वो। आपके पीसी में प्रोसेसर कौन सा है? मेरा Ryzen 5 3600 है। 6 कोर का प्रोसेसर है। ये Vivo V9 Snapdragon 620। Hoarders, they're here. Get them. Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Keep back. Follow the wind. कुछ गेयर के भी नहीं जा रहे, कम से कम वही दे दो। इंसिग्निया। मोरा मिला 300। ये है कैसे करना है? You caught up with me? अरे भाई, how is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, drat! If I only had a vision. Or if I could act. This has nothing to do with visions. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear you boasting and proud laughter in the wind as I was pursued. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. But most disappointing, it appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine, fine. I admit it.
I've had my eyes on this vision for quite some time now. I Ryzen decided to Ryzen register after hearing that this 3200G fighting जैसे हो गया, contest was full of a 3300G bunch of जो भी lousy है। fighters. I fought my way to the finals ग्राफिक कार्ड ले ले and RX 590 RX So 570 you were supposed to be our opponent. AMD का या I'd फिर Nvidia intended to का win the 60 contest 60 your या skill 60 alone 50 all along. But then you और बाकी showed RAM up. RAM After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up. Drat. This could... I know an empty threat when I hear one. Fine. You know, according to... Huh? You're not to mention that the item you stole, it seems that it would be only... Whoa, whoa! We don't need to go there! And if this is where talking gets me, then forget! ओ भाई ये तो लड़ रहा है, चलो इसे तो ऐसे बोलेंगे अभी। अबे तो मर गया, ये क्या मारेगा मुझे? ये क्या मारेगा? No, no, do what you want, but put down the vision and. Huh? Amazon में मिल जाएगा सारे स्पेक, Amazon पे मिल जाएंगे तुझे, या फिर हाँ Amazon पे मिल जाएंगे। What's wrong? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. Welcome again to the stream, bro. No, no. मतलब काफी बड़ा वो है। A treasure hotel leaves in a frenzy, okay? I take no pleasure when people are forced into a corner. That is when they're great. But unfortunately, yes. I wanted to know from the moment he stole the vision. I've tried many other, though few tales tell of a master. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is a come. Why don't you give it a try? I see. No matter. This was expected. Why are you I suppose this vision is still... Yeah, what? The story begins... क्या ये story इतनी लंबी भाई? दिमाग खराब कर दिया। He was once a good friend of mine. Cutscene. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. नहीं ये लास्ट मिशन है, अब इसके बाद इनाजुमा पे पटक देंगे यार यार। ओके चलो फाइनली बूबा सॉर्ड ओपी। अरे सही में बहुत बढ़िया कट सीन था रे। बाल, अच्छा वो बाल था। But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Allow me to gather. चलो let's go. बूबा सॉर्ड हो गई। बूबा सॉर्ड तो यार क्या ही बोले अभी इसे।
लव गिफ्ट दे दो हमारे बाल द कूलेस्ट Did they आते leave हैं already? सब क्या तो रहे हैं बढ़िया If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It Yep. seems that the Crux clash got out of hand this time, and as a Captain Beidou was... But still... The one who stole the he knew he stood no... In which case, the... Huh? If that's... Paimon thought we'd... It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor... Yes, I believe... But the voyage to Inazuma is a treachery. In fact, the... Hold on a second. Let us not forget. Suffice it to say that if you wish to... In the meantime... Paimon believes you... Thank you. One final word of... Quest completed, guys. Finally. सेटिंग सेल अब हमें यही करना है मेन बेसिकली। तो अभी 5 मिनट रुको गाइस, मैं जरा वॉशरूम होके आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का ज्यादा हो गया, थक भाई पकड़ गई पीठ पे। अभी करते हैं कंटिन्यू।
वेलकम बैक गाइस। अभी तक आए नहीं, आ गए। अरे आ गया 5 मिनट ही बोला था, 5 मिनट के लिए जाऊंगा यार, छोड़ के थोड़ा चला जाऊंगा। चलो गाइस, हाँ अब हमें करना है अपना मेन सेटिंग सेल टू इनाजुमा। फाइनली वी आर गोइंग। I smell rabbit. हमें 900 मीटर जाना है आई गेस। फिर से ओह यहाँ पे लीवे जाना है हमें। ओके तो मैं पहले स्टैच्यू ऑफ 7 जा रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ बढ़ा के आए, फिर वहां चलते हैं। यू आर बैक। यस तुम भी सारे आ ही गए 5 मिनट में। हेल्थ बढ़ा लेते हैं सारे कैरेक्टर्स की। 3 मिला ना मुझे, और या हो जाएगा ये 24 लेवल 9 तक पहुंचा ही दूंगा मैं। मैंने अभी थोड़ा ये वाला एरिया एक्सप्लोर कम करा है, तो बाबू भैया बिग फैन यो देगा सारे। काफी जने हो गए मेरे पे सारे भाई, तुम सारे बहुत हाई लेवल हो। 42 45 49 56 लीसा इस पे, मोने 53, ये के आई है जो तुमसे भी बात कर रहा था ना, इसका लेवल 56 है मोने का। हाय बाबू, हाय अवीश, कैसा है? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, लव यू। अरे अरे बस यही तो चाहिए और क्या। थैंक यू ब्रो। चलो अभी करते हैं फाइनली। हमें ल्यूई हार्बर से जाना है, मुझे लगा फिर से शिप पे जाना होगा मुझे। चलो ल्यूई से जाना है। After you complete delivery, don't forget to go to the adventure. Yeah. चलो guys, Ad ये तो हो Astra जाएगा। Abyssosque. What can I do for you, traveler? About the traveling to Inazuma, Yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's इनका been quite pronunciation some देख रहे हो time अलग है since I काफी last ज़्यादा। visited those हम lands. इनाजुमा बुलाते हैं, ये इनाजुमा। Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. Okay. There you are. ये तो You're the pirate आ traveler गया। that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews of Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as... Seems Beidou is the captain. Of course! There are many things that the captain insists upon. So you'll be heading off then? Whether the journey before you leads to the heights of चलो the guys, heavens or the accent, depths of the abyss, each accent, step you take जो भी is बोलोगे another मतलब achievement. वो वही कहने का मतलब Until है। we meet again. मतलब इनका बोलने Ad का तरीका Astra अलग है। Abyssosque. Oh, it's kind of hard to say goodbye. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. Okay. So there's another Catherine in Inazuma? See? There's no need to get all sappy. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered... Okay, thanks for... Just following orders. चलो guys, ये तो हो गया। The immovable god and the eternal. अरे ये तो उसका नाम था जो ट्रेलर निकाला था, The immovable god। यही तो ट्रेलर का नाम भी था। We have to go 1000 meters, bro. What the hell? कहाँ जाना है मुझे? अच्छा वहीं जाना है। मैं कह रहा पानी में 1000 मीटर जाने में तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। वही करेंगे, ऊपर चढ़ के चलेंगे या फिर आई गेस नहीं, ऊपर जाना ही पड़ेगा मुझे। तैर के तो नहीं जाने वाला मैं। और तैर के जाने में कितना टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है कि ऊपर चढ़ जाओ 5 मिनट में। और ये जो हरे हरे स्टोन्स होते हैं ये मूव करते हैं क्या? मैंने मतलब मूव तो करते हैं, ये तो मैंने देखा है, बट कैसे करते हैं ये नहीं समझ आया अभी तक मुझे। एक मिनट।
I taste blood. ये क्या बकवास था? डरा दिया तूने तो यार। पागल ऐसे डराएगा मतलब तू अब? देख रहे हो मेरी शील्ड कैसे बचा रही है मुझे? कुछ भी नहीं डैमेज पड़ रहा, वरना अभी तक मेरा आधी हेल्थ हो जाती मेरी। इजी। अबे मैं कहाँ गिर गया? नहीं 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 नहीं, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चढ़। भाई क्या बकवास है ये? ऐसे गड्ढे क्यों बनाते हो तुम? ये क्रिस्टल कोर से क्या होता है? मुझे इसका भी नहीं पता। किया ब्रिज मेकर, हाँ वो है तो ब्रिज मेकर, लेकिन जितना टाइम लगाता है ना वो इरिटेट हो जाता हूँ मैं उतनी देर में। इससे बेटर है ऊपर चढ़ के चल ले जाओ उड़ के। 5 मिनट का काम है वो। लाइक इतनी हाइट से तुम इजीली पहुंच जाओगे और तुम्हें एम्बर लेने की भी जरूरत नहीं है। स्टैमिना जाता ही नहीं ज़्यादा, आधा स्टैमिना भी नहीं जाता। इससे क्या होता है, ये जो क्रिस्टल कोर मिलते हैं, ये जो वो नहीं उड़ते रहते गोल्डन गोल्डन से पंछी से, उससे जो हम उसे F दबाते हैं तो क्रिस्टल कोर मिलता है। बताता हूँ शायद इसमें होगा आएगा। ये तो 4 सिल्वर है। लिमिनस स्पाइन, ये क्रिस्टल कोर गैदर बाय कैचिंग क्रिस्टल फ्लाइज। इससे क्या होता है? अच्छा हाँ, इसका नहीं पता मुझे भी। भाई ये नहीं देने वाले, ये तो ये नहीं देने वाले कुछ। ये नहीं दे दे अब गरीब को आया का। ये 40 रेजन यूज करता है और आपको डबल आइटम देता है डोमेन में। ओह समझ गया, सही है। मुझे क्योंकि अभी तो मैंने यूज भी नहीं करा, मैंने पढ़े बहुत सारे हैं। Come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. अरे बेडो तो ये फुल एकदम लग रही है जैसे सही में पायरेट ही हो। We set sail for the land engulfed by storm and tempest. Let's go to Inazuma, the guys. nation of eternity. Anchors away! जिसका इतना इंतजार था सबको। जिसका तुम्हें
Ahoy there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. Welcome to Inazuma. Yes, guys, finally welcome to Inazuma. सबको क्राफ्टिंग टेबल में देखना. अच्छा, ये जो रेजन वाला कह रहा है तू डबल आइटम देता है. हाँ, देखूंगा ये, मैंने देखा नहीं अभी तक. बेटू की स्टोरी भी बहुत ओपी है. हाँ, बेटू की स्टोरी होगी अच्छी. स्टोरी सबकी अच्छी है वैसे, ऐसा वो नहीं है किसी की भी कि बेकार हो या फिर वो, मतलब सबकी प्लेएबल है और काफी इंटरेस्टिंग है. एंड वेलकम टू इनाजुमा गाइस. फाइनली we are here in Inazuma. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of the... Oh, it's sure nice to okay. ये भी playable character या फिर ऐसे ही है? With any luck, Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally then. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Playable. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. मजा आएगा फिर तो अगर playback class not yet बना will come later. Oh. Until next time, traveler. निकाल ही देंगे Remember आगे to give it your 8 साल में. all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye bye. चलो बेटू से हो गई खत्म interaction. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Oh, okay then. चलो जो जैसा बोल रहा है इसे ज़्यादा knowledge होगी. US completed guys ये भी. इतने सारे तो वो भी है इसमें achievements ही. बेडू मिल गई क्या मुझे? नहीं अभी नहीं मिली. Complete the confession of an outlander to unlock. अच्छा अभी एक और करना है मुझे. Confession of the outlander. अपने पॉट नहीं किया अभी ओपन. हाँ मैंने पॉट नहीं किया ओपन. वो हो ही नहीं रहा था. मैं ट्राई कर रहा था. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. और क्या? Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... पॉट में वैसे है क्या? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers, for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. हमें लगा आते नहीं देंगे. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. COC type है. Okay. Where do we go next? The Outlander they only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with that. Sheesh. So it is... Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. My journey must go on. I like how you think. Now, let's head over to the Outlander. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The
Kanjong Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of नहीं, port के Inazuma, अंदर। responsible for growing and managing the nation's और wealth. यही है ना? ठीक है। यही तो है शायद। नहीं। अबे ये क्या है? Monolith fragment level 5? पता नहीं। पता नहीं गाइस क्या क्या पढ़ा, मुझे तो पता भी नहीं। Unusual item, omnious dish। अरे भाई साहब। You can talk to character also। नहीं वो तो हाँ ये है ना पॉट, तो मैं इसे प्लेस नहीं कर सकता, कर तो सकता हूँ। प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग। मुझे कोई क्वेस्ट करनी है तब उसके बाद ही कर सकता हूँ मैं। ट्रेंचियस कुछ करना है मुझे, ये देखो ये आता लिखा हुआ। ट्रेंचियस थर्मेडॉन, ये कौन सी क्वेस्ट है? ये करनी पड़ेगी तो मैं कर सकता हूँ। ये वाला मुझे मिशन समझ नहीं आ रहा है, वाला किसमें करना है? You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Yeah. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry. You can trust my math. 2 million? Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? अरे full line मार रहा है। By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. अरे वाह। Much obliged. 4 लाख में मैं तो बोलने वाला था 4 लाख की भी चल सही है, मैं तो दे भी देता। Paimon का अच्छा हुआ। 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of I finance think around it's here. about more than Mora. Reminds me of someone else's strange relationship with Mora. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is
as an achievement when you're an outlander in Inazuma. सही में सब इतना महंगा कर रखा है बेचारों So के लिए. this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Okay. Really? Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone in. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association, recently things seem to have gotten more difficult than ever for them. The head of the association is called Carisio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. कि यहाँ ये करना है, ये इससे बात करनी है और ये करना है. खत्म. 3 सेंटेंस में खत्म. नहीं, इन्हें पूरा बुलवाना है. वो तो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन यहीं पे आना है. Oh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Ah, good. That's a relief. You need... We heard the association has been having some difficulty. Yes. Left, right, and center. The Sakoku decree certainly makes things difficult. But it's not the root cause of our woes. No. What's really those Mora grub... Oh. That's right. They just issued a... Crystal Eventually. So, in order to... But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one bet. Exactly. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... This is absurd treatment. Can you discuss the situation with the Commission? We've tried communicating with the Commission directly. But this is a nation where the cries of a few struggling Fontaine... Sounds awful. What do you think we should do? Try our best to negotiate with the Consul. The vendor does sound really like a... But Chris is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to... Right. And besides, I think this may... Okay. Well, we could... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea... Well, it definitely sounds like he's being... Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association, if I remember... Got it! We're up... हमें घटनी उससे बात बस ये करना इतना बोलने के लिए इन्होंने इतने 10 घंटे की दिमाग खराब करा है. चलो यहाँ का टेलीपोर्टर भी खोल लिया मैंने. ये क्या बियर बेचते हैं? यही होगा. Yep. Huh?
I don't think I recognize you. Are you new arrival? So, what do you need with me? The sheer nerve. Trade secret. Got it? You know. This guy's got a bad attitude. Ha! Are you? They're wasting their time. Hey, what's your problem? Get out of here. Go on. Tell them. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Time to get real picture, guys. Good idea. Let's check back in with him. अब पहले उस पे जाओ। ओ भाई, लाइक इस गेम की जो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन है ना, बस उसी रीजन की वजह से गेम बहुत अच्छी है ये। हमारा तो बहुत चीजें बहुत इरिटेटिंग है। लाइक छोटी-छोटी चीजें बहुत बड़ी बना रखी हैं इन्होंने। You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is... Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight. I can only assume he must have found himself... Huh. You're saying... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the ship when Inazuma closed to the outside. Huh. The international trade... So he left... I'm sure it's more nuanced than that. Really? Well then, it sounds like you... Music अच्छा है ना। What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? A Barcelona would be fucking hot Italian wine. Mondstadt? You were talking about... ये दे देते हैं, I guess. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know. Huh? What is this? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. क्या हो रहा है ये? This guy has a really active... Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to... I run into folks from the association. Well, no one... So, I caved. Those people, they'd make the... All right. You ready to talk now? But I betrayed them. Come on, get... It's a scheme by the tax collect. They start by once the merchants run up... It's just... I'm their puppet, yes. Evidence. Now that I think about as it happens. Really? Keijiro,
It's him! After him! अबे दूसरी सिटी में आई नहीं कि पहले पंगा लेने लगा. Come out, I can see you. Who are you? Why are you following me? Should I seems like he's noticed us. Not like I'll get any customers. अच्छा बार-बार करना है without being noticed. Love or freedom? Which one should I choose? Should I close early? It's not like I'll get any customers. Confession निकालना है इससे. Without being noticed. Too close! That's too close! He'll notice us for sure! Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! अरे भाई साहब. Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Huh? Where'd he go? He was क्या करना? right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. अच्छा. Only we made less noise. फिर से करना पड़ेगा मुझे I guess. फिर से करना पड़ेगा मुझे. छोड़ना नहीं है उसे. Should I close early? It's not like I'll get any customers. Easy है हो जाएगा. Draw his sus. Which one should I choose? अरे इसकी ऐसी हम तैसी आराम से चले गए. अब मुझे पता है वो देख कहाँ देखेगा. और यहाँ जाके मुड़ के पीछे देखेगा वो. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. जरूर. बस अभी से भागने नहीं देना. भाग जाता है. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. He's getting further and further away! What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. रुक जाओ थोड़ा सा बट्टा कहीं सही में देख ही ले. हो गया. Easy. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? देख के आते हैं. पैसे होंगे. मजा आ जाएगा. चेस्ट मिल जाए. जीरा लग्जरियस चेस्ट. अच्छा लग रहा है तो. कुछ भी नहीं है. ये क्या लेजर होता क्या वैसे? The real legend Paimon came along. Even if we did find Mora, we would give it to the Trade Association. Let me take a look here. Aha! Yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Oh. Well, now we... I'll say... Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time. Huh. Oh. Forward.
कन्फेशन मिल गया, चलो गाइस लेट्स गो। अबे चढ़ गई, हर जगह चढ़ना ही होता है इसे। यहाँ पे बताना है। But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. सही बात है। Huh? Is this true? You've been swindling us. चलो पकड़ा गया, पकड़ो, मारो। You see, the taxes, Let me take a look at the ledger. चलो अभी से गुत्ती पे लेंगे इसकी। Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? और क्या? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? And not even it. So that's it? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. Gentlemen, come now. Is there... Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. Of course not. Still, perhaps you could show the ये young... कमीशन अलग है, समझ नहीं आ रहा मुझे। Lady of our clan courtesy. ये क्या है image? Lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition. That fan. The Shirasagi Himegimi. अबे ये क्या नाम ले दिया? I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one But, Chief! Enough! Let's get dinner one day soon, gentlemen. No response, huh? Thank you so much, Toma. Hey, if nothing... Toma? Shh, not here. We need to navigate. छोटा सा ही लग रहा है ये Inazuma, ज्यादा बड़ा तो मतलब ये Corruption seems जो rife main in वो the है। Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point.
Let me reintroduce myself. क्या था ये? I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. अब ये क्या है? You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. Seems like Her fame even I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation, you're asking the right questions. And to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island. And I got to know Captain Beto during that time. still pretty good. Well, Inazuma may have closed. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide? In the test I gave you earlier, navigating power. With your help, even the Vision Hunt decree. That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. One more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Toma's not such a bad guy, huh? Huh? What's up? Oh, right! Wait, so did Toma forget that too? This must be the next part of his quest. Darn it! No wonder he... As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Paimon Tea gusto House natin, to cute settle लगती the है. score. Well, guess we should... Oh, quest completed. 800 experience मिला. Route to escape plan. Try to leave. मेरा अभी तक वो नहीं हुआ ना, I guess. Complete the right to escape plan to unlock. ये भी अब मैं कर सकता हूँ. A flower blooms in a prison. A flower blooms in a prison. ये कौन सा क्वेस्ट है? ये तो मुझे पता भी नहीं. अभी तो ये चल रहा है. Stop there. Present your... Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? I wonder if the Konjo Commissioner was. Are you saying we should go and meet with the Konjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Who knows? सही बात है. ट्राई करने में क्या जा रहा है? Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. We're here to see, The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to get... Come on in. Did you get all that? My sincere... बेचारा. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head... Nice to meet you. So, the reason we... All right. So what you're... Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the Overlord of the Vortex back under the sea? अरे भाई साहब सबको पता मैं हमने मारा है. And... Whoa, you heard about that too? Something wrong? No. I'm simply awestruck. Rito is greatly on. One other thing. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. You must know the Qingshin.
A flower. Yep, we've picked a few of those before. So... Yes, bring me 300 Shinxin, would you? Freshly picked, I mean. 300? Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help. That sounds much more... 709 letters to... Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? 709 लेटर कौन देगा पागल है क्या? That's the spirit. Don't keep... उसने हाँ बोला ना तो हम हाँ कर देते हैं. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Oh, Statue of 7 है यहाँ पे. And even वो भी है. अपना एरिया गाइस डिस्कवर हो गया पूरा. ये वाला तो यहाँ पे और भी हैं, 2 और हैं. उफ उफ. इसके अलग से अब, अरे भाई साहब इसका भी लेवल 10. सारे ढूंढने में तो भाई जिंदगी निकल जानी है, सही बता रहा हूँ. वो रहा ऊपर है. इस पे कैसे चढ़ेंगे? इसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, या नीचे से क्रॉसिंग नहीं कर रही. इसके लिए तो मुझे वेंट ही चाहिए लग रहा है. कहीं ना कहीं से तो होगा ही रास्ता, आई गेस. यहाँ से भी नहीं है. वो है ऊपर जो नए वाले आए ना, जो भी उन्हें बुलाते हैं ना. रास्ता तो नहीं मिल रहा मुझे. चलो बाद में आके लेंगे इसे, देखेंगे. आई गेस किसी और तरीके, कोई और तरीका होगा. Halt, you two! What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. Okay. Quick, let Paimon Would that I convey this message to you in person? I presume further history means by which this letter has come to you. I hope that it hasn't left feeling a preference. Anyway, this is my first time extending an email to an unknown outlander. After all this, it is no more coincidence that our paths have crossed. Therefore, I hope that you would be so courageous to meet me tonight under the glow of resonant moonlight. Please do not I look forward. Okay, रात में मिल रहा है. So this means she wants you, but you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? चलो देखते हैं क्या होगा. Meet
Around 18 to 24. Okay, तो फिर मेरा टाइम है. चलो वेट करते हैं. You finally arrived. Allow me to introduce. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. The pleasure is mine. I'm delighted to see you again. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishment. Is it Paimon or does... The reason why I want... Discuss? I should like to ask for your help with delivering a letter. Okay. Like father? No, I was hoping that you could deliver a letter to... My father has always forbidden me from communicating with him. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to... Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That, to be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the Shogun. Since we need to get out of Rito as fast as we can. We don't have much time. Okay. Very well. I'll be... Let's go. मैं तो ऐसे चला जाऊं उड़ के. Hold on, please. These goods are being sent to... My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island. Is there something wrong, Lady Hero? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter, and... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that... Yes, of course, my lady. It's just that... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? Do you really presume that you can fully get... Boy, Chisata... Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our... Shinojo, you can't really be... Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. Escort the transport balloon safely to its destination. Okay. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Dodge this. That tingle? That tingle? ये
तैसी भगो यहाँ से Let's get down to business. Cool it. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. I got हो जाएगा ये तो easy है picked the wrong test subject. Watch out! More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. Cheap trick. Light the way for me. Cut down. To the ferry. तो भाई हार्ड है इनाज़ुमा सही में We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamachi to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my... My lady. So that's how it is. I had a feeling something would... No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm sure of it. But who is this Kamaji? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches... Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are just... Don't fret. My father has always been one... Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft... I wish you a safe journey. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. बेचारा दिल टूट गया We're finally on our own way again. Yes. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! I level up my Sakura tree to 8. Sakura tree क्या है ये? और ये जो समन करने के लिए आ रहा है ये सब क्या है? ये भी नहीं बता मुझे तो. Sorry. Electrolucus. क्या हो गया? बीमार पड़ने वाला हूँ क्या मैं? इतनी चीख आती है तभी आती है मुझे जब बीमार पड़ने वाला होता हूँ. ये क्या है? I taste blood. अबे ये क्या है? मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा.
द हेल? ओह समझ गया। याप समझ गया। इलेक्ट्रो बैरियर नीड इलेक्ट्रोग्राम, याप समझ गया। अब इससे क्या होगा? बस वो तो उसमें मुझे कुछ मिला शायद, पिंक, वो जो पिंक सा था। ये क्या है? एक क्वेस्ट मिली है नहीं? इससे होता क्या है? जोंगली इलेक्ट्रो वेरिएंट इलेक्ट्रो जोंगली सर वीडियो देखा भैया? नहीं यार वो अभी देखा नहीं मैंने, जोंगली वाला वीडियो तो जा रहा है, देखूंगा बट मैं। ओके चल वही करते हैं यार मैं, क्योंकि अब इसके बाद जाने वाला हूँ, यहीं पे रुक दूंगा। एक सामने एक और टेलीपोर्टर है, वो भी खोल लेते हैं, उतना कर सकते हैं। कोंडा विलेज यही है। चलो गाइस अभी यहीं पे पॉज करेंगे। ये तो अचीवमेंट ले लेते हैं जो भी है। अंडर शॉजन, अभी ये क्या है? वॉयज प्रेप, पता नहीं क्या गाइस। लाइटनिंग राउंड कंप्लीट वॉयज प्रेप टू अनलॉक, ये अलग अलग हुआ है क्या? फ्लावर ब्लूम्स इन अ प्रिजन, दोनों के लिए एक ही वो करना है हमें, हो ही जाएगा ये भी जल्दी। हमें मिल गया बेडू, मतलब बेडू मिल गई क्या हमें? पता नहीं, लगता नहीं था। नहीं बेडू अभी तो नहीं मिली। पोषण डाल तो पोषण डाल रहा हूँ बताओ। फाइनली मुझे एक इलेक्ट्रो वो मिल गया आर्टिफैक्ट। अबे वो जो वो है उसके ऊपर कैसे चढ़ना है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अबे क्या बकवास है। नहीं ये तो इजीली आ जाएगा। अबे मैं मजाक चल रहा है क्या सही में? हाँ कर लेते हैं वरना मैं तो भूल ही जाऊंगा मैंने कौन कौन से ले लिया। मैं पहले लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना
एक दिन बैठ के पहले सारे एनोमोकुलस ले लूँ, वहाँ का ख़त्म करूँ भाई हिस्सा। वहाँ के 5 बचे हैं, 6 बचे हैं एक्चुअली, वो लेके मैं ख़त्म कर दूँगा वहाँ का। फिर वहाँ के सारे मार्क्स वार्क्स हटा दूँगा मैं, फिर यहाँ के लेंगे। ओ बीटल है यहाँ पे, वो देखो, ओ भाई साहब ये सही है। कहाँ पे है ये? दिखा तो यहीं रहा है। वो नए एनिमीज। My lucky day. See no more. How's this? भाई ये क्या दे रहे हैं अब? कागची पता नहीं गाइस, पता नहीं क्या क्या है, वो तो पता भी नहीं। लेवल 3 इलेक्ट्रो सिजिल, ओके ओके। ये एनिमीज अभी अपना अलग ड्रॉप करेंगे, इनसे अपग्रेड होंगे। एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अभी तो ये बताओगे इलेक्ट्रोलिकस है कहाँ यहाँ पे? यहाँ पे यार एक्चुअली तो है यहाँ पे, बट इसे खोलना पड़ेगा गेट को। कैसे कुछ तो होगा आसपास। Dodge this. Oh, so sorry. Freeze. मर जा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। इसका फाइटिंग म्यूजिक इतना बढ़िया नहीं है, लाइक बाकी अच्छा है सब, बट फाइटिंग म्यूजिक इतना बढ़िया नहीं है। ओह नाइफ फ्रूट्स, नाइस। लेवेंडर मेलन, मतलब कुछ तो करते ही होंगे। ये क्या है? मुझे लगा बिजली वाले वो है, नहीं ये कुछ और है नया। मैं तो ऐसा लग रहा है मैं बैठे रहूंगा। हाय एमसीपी कैसा है? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। Another test subject. Don't waste my time.
भाई इन्हें मारना तो इजी है यार, अभी बालक है ये। तो कुछ बना सकता हूँ क्या? गॉलोश, जेट पार्सल। एक कोई कह रहा था मुझे मॉन्स्टर में जाके वो मिलेगी वाइन की रेसिपी, देखता हूँ जाऊंगा। ये कैसे खुलेगा? कुछ तो तरीका होगा, इससे तो नहीं खुलेगा। देखते हैं, यहाँ पे दो वो है। चलो गाइस, थैंक यू स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। अब इसे कंटिन्यू करेंगे अगली स्ट्रीम में। वी आर ऑफिशियली इन इनाजुमा एंड हमने बाकी यहाँ पे स्टैचू ऑफ 7 भी खोल दिया है और थोड़े बहुत टेलीपोर्टर भी खोल दिया। तो नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट स्ट्रीम। बाकी थैंक यू गाइस आने के लिए, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का। तब तक के लिए बाय बाय। Are you coming home? Are you letting go? 'Cause I don't know you anymore. I am so